Network. As we are live and exclusive from the sports field of Cup Hygam. It's the grand final of Champions Cup Hygam 2025. We have got United Tapa taking on PMS Panjipora. And United Tapa, they have won the toss and have opted to bat first. Heather and Shoaib, the two batters out there in the middle, and Imran has caught the ball in and he's bowling the first over of the first innings. He's bowling the first over of the final as Imran gets ready on his top up. They're yet to get off the mark. It's one without loss as the second ball has been signalled as wide. One without loss. Heather yet to get off the mark. That additional run has been added to the scoreboard as the ball has been signalled as wide. It is one without loss. We're in over number one, and it's Heather getting ready to face Imran bowling from the commentary box, and Heather and Shoaib are the two openers from the side of United Tapa are out there to start the innings. In the meantime, Imran goes over the stumps, and that's a batter line. Off the back foot he goes and nicely works it on the offside with an open face off the bat. There is point inside the ring. As he fielders the ball, there is no addition to the total. Yet to get off the mark is Heather, as has faced two deliveries until now. That single on board is off the wide that was signalled. As United Tapa will look to get off to a good start after electing to bat first. That's again a good delivery. Tries to go onside. There is an appeal of caught behind, but umpire isn't interested at all. He's trying to go onside for a big shot, for a mighty heave. But he was done with the extra bounce. He was completely beaten with the pace and bounce. And he's lucky there. He survives. There was a gentle appeal of caught behind, but umpire wasn't interested. He signals the ball just brushed the shoulder and routing the keeper. Imran bowling some tight lines and lengths, and again follows up with a fuller delivery. A gentle tap on the offside, and they steal a quick single. He's right behind the line of the ball and just pushes it softly on the offside until that cover fielder goes quickly. He was having a shy at the striker's end, but the batter has made it, and finally there is a single off the bat, and Heather gets off the mark. Two it is without loss in over number one. Shoaib is going to face Imran for the first time. And, four bowlers off the first over. He's been excellent with his lines and lengths. He's bowling with great control there. And more often we've seen him bit back off a length and generating some pace and bounce. And those two deliveries completely troubling the batter. And it's Shoaib as he gets ready to face Imran for the first time. Nicely driven. He's right behind the line of the ball. A gentle push to the cover as the fielder is inside the ring. No chance of a run. You need to start well in a grand final. You know you're winning the toss and you opted to bat first. And you will look to get off to a good start. You will try to give your team a better start with the bat. And more often, the first phase, especially those first couple of overs, where you just try to get your feet in first. And Imran with the final ball of his first over to Shoaib over the stumps. An extra bounce, will have to wait for the signal of the umpire. And there is no signal, and it will be a legitimate delivery to finish the over. We're done with over number one. It is two without loss. Shoaib yet to get off the mark, has faced two deliveries, whereas Heather has got off the mark with a single, has faced four. An excellent over from Imran first over. He conceded just 2 runs, and his lines and lengths, he was terrific. He was disciplined, and he was keeping it nice and simple, and hasn't let the batters in the very first over to go for the big shots, and hasn't let the batters to capitalize on. And it will be Kausar Sophie to bowl the second over from the commentary box end. Heather to face him for the first time. Fuller length ball. Heather launches it on the onside. It's up in the air. Could be a chance. And the fielder has put that one down. Long on was stationary there. The ball was miles up in the air.
and had a chance to get rid of Haider, but unfortunately the catch goes down. The simplest of the chances at long on, as he got both hands to the ball and spills the catch. Haider gets the life as the batters steal couple of runs. It's going to be very costly for the bowler. His first ball of his fresh ever, and he almost got rid of Haider, but unfortunately the fielder puts down the catch, and with that brace Kur moves to 4 without loss. He created that chance, he created that opportunity, but to no avail. Fielder putting down an easy catch at long on. He got both hands to the ball, he got settled under it, he got enough time, but spills that one down. Next delivery, and good length delivery, and wicketkeeper fails to gather it cleanly. Extra bounce, and it runs away down to the third man boundary for 4. Not a good effort at all from the wicketkeeper. It was an indolent and casual approach while he was gathering the ball, and he was a bit late to react as the ball bursts through the gloves and runs away down to the third man boundary for 4. 8 without loss, 4 byes have been conceded, and it was a terrific start for Kausar Sofi, as the first ball could have got him a wicket. Now there is the chance, and it is. A slower delivery has done the trick. He was trying to work the ball on the onside, gets the leading edge as the ball pops up in the air, and wicketkeeper this time doesn't make any mistake. Let's take a look at the replays. He was very late trying to work it on the onside, gets it high on the bat, up in the air, and wicketkeeper completes a fairly simple catch. It's a soft dismissal, as Haider, who had been given the reprieve, had been given the life, wasn't able to continue, wasn't able to make that most use of that drop catch. He goes the next ball, and Kausar Sofi has drawn the first blood. As PMS Panjipora, they have the first wicket. It's 8 for the loss of 1. It's a great start, and you can see PMS Panjipora, they look elated, even though the catch was put down of the very first ball of this over. It doesn't cost them too much, as it took him just 2 more deliveries to dismiss the batter as he walks back to the pavilion on 3. United Tapper have been dented early. They lost the first wicket very cheaply. 8 for the loss of 1. Uzair Shah, the first viewer, commenting. Then we got the proud sponsor of Global News Network, Mansoor, watching us from his official handle, Mansoor Decorations at Rafiabad. Walaikum Salam. Sajad Magre and Imtiaz are the part of live broadcast. Walaikum Salam, brother, and we request you to share the live broadcast and engage your friends to this one, so that you can enjoy, you can love the live broadcast, you can enjoy the game. He's the new batter after the departure of Haider, and let's wait and watch, as the scorecard hasn't been updated yet. Haider goes back to the pavilion on solitary 3, and it is Junaid at number 3 gets ready to face Kausar Sofi. He has been electric in the very first over, as he goes once again, a good delivery attacking the stumps. That is a probing line and length, and he forces the batter to be off the back foot as he pushes it with a gentle hand as on the offside. There is a fielder and no chance of a run. It's been an excellent start. It's been a dream start for PMS Panjipora, the way they started. Although it could have been more trouble for United Tapper had that catch been put down, had that catch been taken. But after a couple of deliveries, he was able to get rid of Haider. And this time again, a variation, a change of pace. He's nicely mixing it up here as he keeps the ball a bit fuller onto the pad, as just works it back to the bowler, and there is no chance of a run. Amir watching us from Amir Hardware Rahama. Walaikum Salam and Tausif Mir. Thank you very much for joining the live broadcast, as you're watching it live and exclusive on Facebook Global News Network. And in case you want to watch this game, you want to enjoy the game on YouTube, it's JK Sports Discovery, and don't forget to press the subscribe button as well. 2 overs gone, and this is a great start for PMS Panjipora. 8 for the loss of 1. Imran will continue. Down comes the batter, but doesn't connect at all. He was trying to take on the bowler by dancing down the wicket, but wasn't up to the pitch of the delivery, as there is no connection, no contact. The ball goes straight into the gloves of wicketkeeper. Here's that wideish slip in place. Third man is out. Here's the backward point, stretch point, cover and mid off on the offside,
and he's bowling according to the field, driven on the up. And for a second the batter, his heart could have been in his mouth. As it drops short of the fielder on the bounce, he fielders the ball. And again there is no chance of a run. It's been an interesting start for United Thapar. A drop catch and a wicket as well. Short ball dragged down, pulls him away and pulls him in style in the vacant mid-wicket area, and there is no one patrolling the boundary line. The ball rockets away into the fence for 4. It's the first boundary being scored off the bat, and it's Panjipora just pouncing onto the short ball and demolishing that one out of the sight and into the boundary for 4. Tausif, and they got Abdul Aziz Rathar. Walaikum salam, and he is watching us from Vizir, Baramulla. Thank you very much for enjoying and loving the game. And let me remind you, this is the title clash. It's the title fight of Champions Cup Hygam, where United Thapar are facing PMS Panjipora in the finals. To winning the toss this afternoon, and they opted to bat first. Hasn't been a good start for them, as they lost header quite cheaply, and now on these two batters just try to carry the momentum forward, just try to get a good partnership for the team, and get those singles, doubles as well, and keep that scoreboard ticking. Imran goes again and nicely guides it, but straight to backward point. There is man inside the ring, and cannot be a chance of a single. It's never a run there, and 12 for the loss of 1. It's Irfat Hussain, Walaikum Salam, Arshid Pare, and Darjaved as well. Amjad Khan is also enjoying the game. We're in over number 3 with the final ball. Imu goes, oh, that's a peach. It's a nasty delivery as it just jumps off the surface. A venomous ball that was, and the batter at the last moment gets away from the line, and he's been beaten all ends up. Fantastic ball, a corker of a delivery from Imran to finish the over. 3 overs completed, and United Thapar batting first, 12 for the loss of 1. Junaid got an absolute peach, that final one, and he had no clues. An extra bounce from a good length spot, and the batter was surely caught in a tangle, and he's lucky there not to nick that behind the stumps to the wicket keeper. It goes mighty close to the outside edge and into the gloves of wicket keeper. 4-1 begins. It will be Kausar, and he has been the successful bowler so far. Driven on the up and over point, and it races away down to the boundary for 4. A bit fuller and a bit wider outside the off stump. A chance for the batter to free the arms. That was beautifully played. Wonderful shot, as he wasn't trying to keep the ball down. Deliberately hits it up in the air, up and over point, and goes down to the boundary for 4. What a shot to start, but Junaid gets off the mark with the boundary. 16 for the loss of 1. Next ball, and he's up to the stumps, just waits for the ball to come and guides it down to the point. The fielder inside the ring, and is never a chance to steal the single. Irfat Hussain, Walaikum Salam. Arshid Pare, Walaikum Salam brother, welcoming you to the live stream. You're watching on Facebook and you want to enjoy it on YouTube, you just need to search JK Sports Discovery and enjoy the game on YouTube as well. Next delivery, as it comes back into the batter, and he was waiting for the ball to come in. Luckily, as a bowler trying to bring the ball right back into the right hander, starting on that off stump channel, and the batter was equally up to the challenge as he waits for the ball. It's a soft push to the cover, and the man is inside the ring, and is never a chance to steal the single, is never a chance to go to the other end. And it's very important you start, and you have to get those singles. You cannot hit 6s and 4s only. You'll have to focus on rotating the strike to build a strong partnership. Next ball, again, you gotta give credit to the bowler there, but for being so terrific, for being so pinpoint and accurate with his lines and lengths. And he just pushes it on the offside. He's bowling stump to stump. He's bowling wicket to wicket with good control here. And he isn't letting the batters to use the fielder restrictions, for 6 overs where you just can have 2 fielders out. Down the track he goes. I see that bowler is a bit clever as he pushes that one wide outside off, a bit quicker and shorter outside off stump. And the batter never had a chance to have a go at this one.
and he gets beaten. The ball goes into the gloves of wicketkeeper. We're in over number 4, and I could say it has been a better start for PMS Panjipora. Just 16 on board and a wicket as well. Next ball, and you see an uneven bounce this time as the ball kept a bit low, and the batter lets it go, lifts his bat to the wicketkeeper. 4 overs have been completed. 16 it is for the loss of 1, and Rebel Danish is enjoying the game. My name is Firdaus, and alongside me I have Sophie Parvez. So got Mir Fayaz watching from Drusur Rafiabad. So the first innings underway. United Tapper batting first, 16 for 1 after 4 overs. Well, I can say it has been a great start for PMS Panjipora to getting rid of Heather and haven't given away way too many runs in the power play, and how I can say quite impressive efforts with the ball, and haven't let the batters to run away. In the meantime, Imran will continue, and first ball of his, never, he's in his third, has been economical until now, has given away just 6 runs. Fantastic bowling display, and the batters, so I can say, have been completely caged up there. Runs out, dried up. We've seen a couple of boundaries being scored off the bat, but more often the batters have been too defensive with their approach with the bat. As he goes once again and tries to flirt with a short and wide delivery, has been done with the bounce of that, and the ball goes straight into the gloves of wicketkeeper. 16 for the loss of 1, and we got 5 fielders on the offside inside the ring. Short third man. It's a wide slip rather. There is point, backward point, cover and mid off. Again a good delivery, pushes it softly to the cover, and there is no chance of a run. Onside, there is long on at the boundary ropes. There is a scare leg in place and a fine leg inside the ring, trying to save the singles. The 2 fielders which are saving the boundary line, third man and long on are out. So bowling according to the fielder, you got plenty of prediction on the offside. You got a packed offside field, and the bowlers have really capitalized it on bowling according to the field. The next one tries to go for this one, have a swing at this, a wild swing, but he's never to the close. He's never to the pitch of the ball, nowhere to the line, and he gets beaten. The ball goes close to the edge and has been gathered nicely behind the stumps by the wicketkeeper. 4 dots on the trot, and United Tapper do find themselves in a spot of bother here, as runs are not coming as they hoped for after batting first. They needed a fire start with the bat, and this has been nicely worked down to mid-on until that long on fielder tidies things up. The batters had enough time to cross for a single, and that single takes them to 17 for the loss of 1. So it doesn't affect PMS Panjipora at all. They've been invited to field the first. They have given a befitting reply until now with the ball. The field restrictions, they have completely bossed the game with the final ball of the 5th over. It's outside off stump, and the batter is half forward and nicely push drives it to short cover region. The man is inside the ring, and there won't be any chance of a single. 5 overs have been completed. 17 for the loss of 1. So it will be the final over of the field restrictions, and all I can say, PMS Panjipora, they've been on a roll with the ball the way they started after getting rid of Heather early on, and have controlled the game well. Those 5 overs, just 2 boundaries have been scored and couple of singles, and that is where they have done an exceeding job with the ball. That's where they have been excellent. They have controlled well with the lines and lengths they have bowled. Sahir is watching the game. Walaikum salam. And it will be the final over of the field restrictions, and we warmly welcome Sophie Parvez to the commentary box. शुक्रिया फिरदौस आपका। तो हाईगाम के शालीबाग स्पोर्ट्स फील्ड पर फाइनल मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी हाईगाम शालीबाग के मैदान में, और फाइनल मुकाबले में पीएमएस पंजीपोरा और यूनाइटेड तापर की टीमें जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबले। यूनाइटेड तापर टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 17 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। आशिल लोन है बॉलिंग मार्क पर पीएमएस पंजीपोरा की जानिब से, जबकि शोएब परा जो है वो सामना करेंगे उनकी गेंद का।
छठे ओवर की पहली गेंद फ्लाइटेड और गेंद को खेलना चाहता ऑन साइड की जाने बल्ले का ऊपरी किनारा और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए। ये चौका आता हुआ शोएब परा के बल्ले से और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21, 1 विकेट के नुकसान पर यूनाइटेड तापर का इस फाइनल मुकाबले में। नजीर अहमद डार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंपायर्स ने जरा देर बाद आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे और साहिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये मीर फैयाज भी हमारे साथ दुरुस्त रफियाबाद से जुड़े। अगली गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रहबल दानिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद परे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को शेयर जरूर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज ऐप पर भी देख सकते हैं। अगली गेंद हुआ द विकेट, गेंद की एक मरतबा फिर पटकी हुई गेंद, काफी ज्यादा पीछे पिच किया, कंधे का भरपूर इस्तेमाल और गेंद जो है सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई बिल्कुल बांध के रखा गया है अभी तक बल्लेबाजों को। और 21 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर यह फील्ड रिस्ट्रिक्शन का आखिरी ओवर यानी छठा ओवर और आशु लोन जो है वो बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट एक मरतबा फिर, लेकिन इस मरतबा ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। अब अंपायर की जानिब से स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 22 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर का खेल जारी। आशु लोन है बॉलिंग मार्क पर जिन्होंने अभी तक 3 गेंदें फेंकी है इस ओवर में और 5 रन आए इस ओवर से। शोएब परा 9 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बट जुनैद 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद बैकफुट पर गेंद को खेल दिया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 30 गज दायरे के अंदर पॉइंट पर रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यूनाइटेड तापर का 23, 1 विकेट के नुकसान पर। आशु लोन जो है वो पारी का छठा ओवर फेंक रहे हैं इनफरादी तौर। उनका पहला ओवर ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी तैनात, 2 खिलाड़ी जो है शॉर्ट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और मिड ऑफ पर 1 खिलाड़ी तैनात दायरे पर, जबकि स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जो है 1 खिलाड़ी को तैनात किया गया है। और ऑन साइड पर 6 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 6 खिलाड़ी तैनात जिनमें 5 खिलाड़ी दायरे के अंदर और थर्ड मैन को दायरे से बाहर किया गया है। बॉलिंग मार्क पर शोएब ओवर में आखिरी गेंद, ये बल्कि आशु है ओवर में आखिरी गेंद के साथ सामना करेंगे उनकी गेंद का शोएब परा। गेंद के बैकफुट पर गेंद को खेल दिया लेकिन फील्डर मौजूद, रन बनाने का एक मरतबा फिर कोई मौका नहीं। 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल, फील्ड रिस्ट्रिक्शन के ओवर जो है मुकम्मल होते हुए और कुल मिलाकर स्कोर है यूनाइटेड तापर का पहले बल्लेबाजी करते हुए 24-4 की औसत से रन आ रहे हैं यूनाइटेड तापर के लिए। 1 विकेट गिर चुकी है इस दौरान यूनाइटेड तापर की। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें जरूर जो है ये इम्तियाज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल और यूनाइटेड तापर का स्कोर है 24, 1 विकेट के नुकसान पर। इरफान अहमद को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर और सामना करेंगे उनकी गेंद का बट जुनैद। बट जुनैद ने 3 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया, जबकि शोएब परा ने 10 रन बनाए 10 गेंदों का सामना करते हुए, बल्कि 14 गेंदों का सामना करते हुए। 24 मजमूई स्कोर यूनाइटेड तापर का 1 विकेट के नुकसान पर। यह फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी हाईगाम के स्पोर्ट्स फील्ड पर, शालीबाग स्पोर्ट्स फील्ड हाईगाम पर। और फाइनल मुकाबले में पीएमएस पंजीपोरा और यूनाइटेड तापर की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले। यूनाइटेड तापर टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर जो है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए इस मुकाबले में अभी तक 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 24 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अबू आइमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंसूर आपका बहुत बहुत, मंसूर के हवाले से कुछ लिखा है तो उनकी आवाज़ आप तक नहीं आ रही है, बल्कि मेरे साथ फिरदौस अहमद और सूफी परवेज मेरा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली गेंद 7वें ओवर की पहली गेंद, गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब, स्क्वायर लेग बाउंड्री से फील्डर आए, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन के इजाफे के साथ 24 बल्कि 26 हो चुका है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। बट जुनैद ने 7 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया और सामना करेंगे एक मरतबा फिर
इरफान अहमद की गेंद का। पीएमएस पंजीपोरा की जानिब से इरफान अहमद है बॉलिंग मार्क पर। इससे पहले इरफान अहमद ने कोई ओवर नहीं किया, अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं और पारी का 7वां ओवर। शाहिद सज्जाद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अलमदीना से हमारे साथ जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि कुलगाम मेरा जो है ये बर्थ प्लेस है और कुलगाम से जो है कुलगाम के रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट जुनैद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत। बट जुनैद जो है वो सामना करेंगे यहाँ पर इरफान अहमद की गेंद का। इरफान अहमद छोटा सा रन अप, गेंद के ऑप्शन से बाहर उठा दिया, लेकिन इस मतबा बल्ले का ऊपरी किनारा। क्या थर्ड मैन कैच लेने में कामयाब होंगे? जी नहीं। और कैच जो है, हालांकि वो आए थे कैच लेने के लिए, लेकिन गेंद उनके आगे जाके गिरी और कोई नुकसान नहीं तापर के लिए। यूनाइटेड तापर का स्कोर 28, 1 विकेट के नुकसान पर। इम्तियाज हमारे साथ जुड़े हैं। नॉर्थ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट विलेज लेवल सुपर 24 टुमारो विल स्टार्ट सेम वेन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज जानकारी देने के लिए। इसी मैदान पर जो है ये टूर्नामेंट जो है शुरू हो रहा है और 24 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कल इनागुरल मैच होगा। 32 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इरफान जो है बॉलिंग मार्क पर। शोएब परा जो है वो सामना करेंगे उनकी गेंद का। शोएब परा ने 14 रन बनाए 19 गेंदों का सामना करते हुए। अगली गेंद ओवर द विकेट। इस मतबा विकेट छोड़कर ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन नाकाम और गेंद जो है स्टंप्स के बिल्कुल ऊपर से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बिल्कुल बांध के रखा गया है यहाँ पर बल्लेबाजों को, यूनाइटेड तापर के बल्लेबाजों को। और कोई आजादाना स्ट्रोक जो है खेलने की यहाँ पे जो है खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज। और आप अंदाजा लगा सकते हैं 7वें ओवर का खेल जारी, सिर्फ 32 स्कोर। इस मतबा बैकफुट पर गेंद को खेला, खेलते ही दौड़ पड़े, रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 33, 1 विकेट के नुकसान पर 6.5 ओवर्स के बाद। यह शालीबाग चैंपियंस ट्रॉफी हाईगाम का फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी हाईगाम के इस खूबसूरत मैदान में। अगली गेंद ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का ऊपरी किनारा, थर्ड मैन मौजूद, बिल्कुल उनके हाथ में जाती हुई गेंद। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34, 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 34 मजमूई स्कोर यूनाइटेड तापर का इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए। इरफान अहमद का पहला ओवर मुकम्मल होता हुआ जिसमें उन्होंने 11 रन दिए और कुल मिलाकर 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल। जी अनवार हमारे साथ जुड़े हैं, डार अलमास हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद सज्जाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इम्तियाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज ऐप पर बैक वक्त देख सकते हैं। यूट्यूब पर जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी, फेसबुक पर ग्लोबल न्यूज नेटवर्क और इसके अलावा क्रिक हीरोज ऐप पर भी आप हमें इस वक्त देख सकते हैं इस मुकाबले के साथ। 8वें ओवर का खेल शुरू होता हुआ। 8वें ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 1 इजाफी रन के साथ 35, 1 विकेट के नुकसान पर। आशुलोन है बॉलिंग मार्क पर जो अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। इससे पहले 8 रन दिए आशुलोन ने। आशुलोन 8वें ओवर की पहली गेंद के साथ एक मतबा फिर ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद और बैक फुट पर गेंद को निकाल दिया। वहां फील्डर मौजूद, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 36 मजमूई स्कोर बिना किसी बल्कि 1 विकेट के नुकसान पर। आशुलोन एक मतबा फिर ओवर में अगली गेंद के साथ। ये 8वें ओवर का खेल जारी है। अगली गेंद इस मतबा बैक पर, इस मतबा बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 40 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। और शोएब पर्रा के बल्ले से आने वाला ये खूबसूरत स्ट्रोक। वारिशफाक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैच इस वक्त जारी है शालीबाग स्पोर्ट्स ग्राउंड हाईगाम में। अगली गेंद के साथ आशु एक मतबा फिर लेग स्टंप से बाहर, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। अंपायर की जानिब से इशारा आता हुआ वाइड बॉल का और स्कोर बढ़ता हुआ 1 इजाफी रन के साथ 41। फैसल शब्बीर हमारे साथ जुड़े हैं, वारिशफाक जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इस लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। अगली गेंद आशु लोन की, इस मतबा ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलने में कामयाब हुए हैं। एक रन बना, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं लेकिन मना किया और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर 42। एक विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल जारी और कहीं ना कहीं यहां से रन्स की रफ्तार को बढ़ाना होगा क्योंकि 8 ओवर्स का खेल हो चुका है और स्कोर बोर्ड अभी जो है औसत अगर देखी जाए तो 5 के थोड़ा ऊपर है औसत। अगली गेंद ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की ऑप्शन से बाहर और इस मतबा जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश की थी बट जुनैद ने, लेकिन गेंद जो है थोड़ी नीचे रहते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 42 स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। आशु लोन बॉलिंग मार्क पर है और पारी का 8वां ओवर फेंक रहे हैं, इनफरादी तौर उनका दूसरा ओवर और स्पोर्ट्स फील्ड हाईगाम पर ये फाइनल मुकाबला जारी। कुछ दोस्त हमारे साथ जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं कि कहां पे है ये मुकाबला, तो शालीबाग स्पोर्ट्स ग्राउंड हाईगाम में शालीबाग चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। इस मरतबा कदमों का सही इस्तेमाल लेकिन हवा में ज्यादा खींचा इस गेंद को और लॉन्ग ऑन से फील्डर आए, उन्होंने कोई गलती नहीं की तो एक आसान सा कैच लेकर यहां जुनैद की इनिंग का खात्मा होता हुआ। जुनैद आउट होकर पवलाइन वापस जाते हुए दूसरी विकेट गिरी यूनाइटेड तापर की बट जुनैद के रूप में और 42 के स्कोर पर ये दूसरी विकेट गिरी है। डार बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो क्वालिटी के हवाले से जानकारी देने के लिए कि वीडियो क्वालिटी अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे साथ जुड़े रहिए और इस लाइव नशरियात को जरूर शेयर करें। 42 मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। मुश्ताक बाबा आए हैं, नए बल्लेबाज जो साथ निभाएंगे शोएब परा का। शाहिद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप यूट्यूब पर भी हमें देख सकते हैं जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी पर और इसके अलावा आप हमें क्रिक हीरोज ऐप पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस फाइनल मुकाबले का 8वां ओवर जारी है। पहली विकेट जाती हुई लोन इशू के खाते में। आशु लोन जो है वो बॉलिंग मार्क पर है और अपना दूसरा पारी का 8वां ओवर फेंक रहे हैं। 42 है स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर यूनाइटेड तापर का। यूनाइटेड तापर और पीएमएस पंजीपोरा के दरमियान फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी शालीबाग स्पोर्ट्स फील्ड पर। आशु लोन बॉलिंग मार्क पर और उन्हें अपने साथी खिलाड़ी जो है कुछ सलाह मशवरा देते हुए, जबकि नए बल्लेबाज जो मुश्ताक बाबा आए हैं क्रीज पर गए हैं। गालिबन बाएं हाथ के बल्लेबाज है, जी हां बाएं हाथ के बल्लेबाज है मुश्ताक बाबा और उनके लिए ओवर द विकेट क्या बॉलिंग करेंगे आशु लोन, ये देखना होगा। जाफर सईद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फील्ड तरतीब दे रहे हैं आशु लोन। ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे इशफाक अहमद हमारे साथ इस दौरान जुड़े हैं। परे तारिक और जाफर सईद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर करें। 42 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर आशु लोन 8वें ओवर की 5वीं बल्कि आखिरी गेंद के साथ नए बल्लेबाज मुश्ताक बाबा के लिए, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है। ओवर द विकेट उनके लिए बॉलिंग करेंगे आशु लोन। आशु लोन ओवर में आखिरी गेंद के साथ ओवर द विकेट। लंबा बॉलिंग रनअप 15 या 16 कदमों का रनअप आशु लोन का। ऑफ साइड पर अभी भी 6 खिलाड़ी तैनात और ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी तैनात। उसके लेग बाउंड्री पर 1 खिलाड़ी को तैनात किया गया है। अब आशु लोन ओवर द विकेट, नए बल्लेबाज मुश्ताक बाबा के लिए। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, विकेट कीपर सफाई के साथ रोक नहीं पाए और इस दौरान बाई की सूरत में रन हासिल होता हुआ अंपायर की जानिब से अब इशारा आता हुआ वाइड बॉल का और स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन के इजाफे के साथ 44 हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। और दोबारा से आखिरी गेंद फेंकनी होगी आशु लोन को। 44 मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। शाहिद सज्जाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इशफाक अहमद हमारे साथ जुड़े। परे तारिक के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशु लोन ओवर में आखिरी गेंद के साथ एक मतबा फिर ओवर द विकेट, गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब और खेलते ही दौड़ पड़े, रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ
45 हो चुका है, 2 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल। और अब अगली आवाज मेरे साथी इंग्लिश कमेंटेटर फिरदौस अहमद की। Well, it has been a fascinating session of play, especially for PMS Panjipora, as they got 2 wickets in the meantime. 45 on board for the loss of 2 wickets. And the run rate is just under 6. It's 45 for 2 after 8 overs. Mushtaq Baba, who just arrived at the crease, is yet to get off the mark. And Shoaib Para is batting nicely on 21 of 24 bowlers. Ashulun completing that previous over. In his 2 overs, he has conceded 18 runs and has got a wicket as well. It will be Saifuddin who has been introduced into the attack. Has been a great day of play. Has been an exciting session of those 8 overs for PMS Panjipora. They've been invited to bowl first and they have replied so well. It has been an elated session of play for them. Those 2 wickets at the top of the order, and especially they haven't let the batters to score runs freely. And taking a look on the field on the onside, there is no one inside the ring trying to save the single. All the fielders have been put on boundary ropes, deep scare leg, mid-wicket and long on, patrolling the boundary line. It will be Saifuddin with the first ball of his fresh over the stumps. He goes down the leg side, and this has been nicely whipped away to deep scare leg. And the batters had a chance to steal a single. Goes down to the other end is Shoaib Para as he moves on to 22 and takes the score to 46 for the loss of 2. It's a left hand right hand combination out there, and the bowlers definitely have to find that right spot where you need to bowl and keep batters a bit quiet. And he has got a ring of fielders on the offside, a flying slip in place. There is a stretch point, there is extra cover inside the ring. We have deep cover out and long off for the right hander, and on the onside there is just a solitary fielder at mid-on with the full delivery onto that middle and leg stump line. This has been worked away nicely on the onside off the hips, and he gets a single. With that single he is off the mark and takes the score to 47 for the loss of 2. May I remind you once again, this is the final, it's the title clash of Hygam Champions Cup, where PMS Panjipora taking on United Thapar. And this afternoon it was the captain of United Thapar who decided to bat first after winning the toss. It was a worst possible start for them as they lost their strike batter in just over number 2. And for that second wicket it was a good start. It was a good partnership going on, but it was Ashu who was able to break the stand for the second wicket. Was caught at long on. Dar Junaid was the second man to depart, and now Shoaib Para and Mushtaq have got the responsibility on the shoulders onto the next delivery. The batter was putting on those dancing shoes by coming down the wicket, but he was never to the pitch of the ball. He was nowhere close to the delivery, and he misses. Wicketkeeper fails together, and they steal a single. 9th over is in progress, and we got Saifuddin bowling his first to the left hander. He goes once again, and he's bowling round the stump. Short delivery pulled away on the onside. This is up in the air, straight down to the throat of the fielder. One more bites the dust, and short ball has done the trick. He was trying to loft him away to clear that mid-wicket fielder, but never, and it was in the air. And it's a simple catch to the fielder at deep mid-wicket, and it is Mushtaq Baba who walks back to the pavilion. He looks dejected and he walks back. Devastation for United Thapar as they lose their wicket number 3 on 48. And in the very first ever Saifuddin strikes, although it was a half tracker, it was a real drag down, and he was trying to go on the onside and fails to clear that big boundary, fails to clear that fielder at mid-wicket region, and hits it straight down to the throat of the fielder, and he doesn't make any mistake. It's a simple catch, and one more bites the dust as third wicket goes down. It's 48 for the loss of 3, and Saifuddin strikes in his first over after 8.5 overs, and United Thapar in tatters here, in deep trouble, as 3 top order batters are back into the pavilion, and all the batters have departed quite cheaply, and they just have 48 runs on board.
You got Shahid Sajjad and Ishfaq Ahmed watching the game with Tajammul Ganai. And this has been a quality start. It has been a dream start for PMS Panjipora in this final. They're fighting for the title and they have done an exceeding job with the ball. Everything the bowlers have touched, it has turned out to be a golden dust for them. And wickets at regular intervals, wickets at top means that United Tapar, they got serious pressure on them and they're finding themselves in bit trouble here. But definitely will be back into the contest. The doors are wide open for you always in the game. You can strike back. A couple of good partnerships will mean that they will be definitely in the hut. They will be definitely in the gap in the game. And they will have to do special efforts with the bat. Again is this quality side of PMS Panjipora. It will be the final ball and Yusuf is the new man at number 5 as he walks down the centre. With his team needs him at this crucial stage. He needs to deliver a box office performance with the bat. And the team surely needs him at this stage. With 48 for the loss of 3, hasn't been a good start for them. Hasn't been the kind of start they would have liked it for after winning the toss and deciding to bat first. It's Altaf Ahmed Bhatt watching us from Sopur. Thank you very much, Altaf Ahmed, for enjoying the game. In the meantime, Yusuf faces him for the first time. And he's nicely forward with bat and pad close and drive was that one. A superb drive, but cannot beat the fielder though inside the ring. 9 overs gone. And United Tapar batting first in this grand final. A 48 for the loss of 3. Quality start for PMS Panjipora. The bowlers delivering a good performance with the ball. And the thing which has been in their favour is that they have been able to pick up wickets at regular intervals and haven't let the batters to run away and haven't let the batters, and especially as Parvez said, they haven't given the batters that freedom, that liberty to go for those big shots or to score freely. Has been kept quiet and has been an interesting phase for them. A bowling change with the first ball of the fresh over. Tanveer has been introduced and first ball he bowls down the leg side. It's a terrible start for a bowler. Has conceded 5 wides onto that. Down the leg delivery and wicketkeeper wasn't able to gather the ball cleanly. No fine leg in place and the ball races to the boundary for 4. 5 wides takes the score to 53 for the loss of 3. And it will be really a great responsibility on the shoulders of Shoaib Para to carry the innings forward, to be there. He's got his feet well set, but he's just watching at the other end the partners falling at regular intervals. He's just watching wickets fall. Next ball capped a bit low, but he just backs away and pushes that one on the offside. Finds the gap, the ball goes to deep cover and the batters had enough chance to cross for a single, and he goes down to the other end, brings Yusuf on strike. He's just yet to get off the mark, and that's a good ball as it rises off the length. Yusuf waits for it till the last moment and guides with an open pace off the bat to shot. Third man is inside the ring and the batters steal a quick single. 55 for the loss of 3 at the halfway stage of the first innings. Tanveer goes again, an outside edge and has been grabbed. That is an excellent catch. That is a fantastic catch at short third man. He jumps up in the air and plucks that one out of thin air. A great catch to dismiss Shoaib Para as well, as United Tapar lose their wicket number 4. And this is a great start for PMS Panjipora. The game is going nicely for them and they're completely bossing the game, completely in commanding position, in well control of this one. That was short and wide. The batter was going down the track to loft him away, gets the top edge and it flies up in the air. A reaction catch there by short third man fielder, grabs that one nicely. It's a screamer. 55 for 4 United Tapar. And the innings never went off, the innings never picked pace as they lost 2 wickets at regular intervals. It was second over where they lost Heather, and then there was a small little partnership for that second wicket. It was Ashir who was able to break that stand and was caught at long on. Then after that the lefty Mushtaq Baba was caught at deep mid wicket, and now a set batter Shoaib Para walks back to the pavilion and leaves United Tapar in deep trouble. With 55 on board for the loss of 4 wickets after 9.3 overs at the halfway stage, we can say
It has been a heyday, it has been a successful day until now for PMS Panjipora, even though the coin never went in their favour. And it was the captain of United, Thapar, won the toss and he decided to bat first, hoping that they will go out there, they will enjoy batting on this good batting surface. But it has completely backfired, that decision, and they have lost wickets in heaps now, and hoping to get a good start to put runs on board in a finals game. That's what you always think when you bat first, and you will look to put runs at least, if you, in case it's an 18-over game per side, they will go up to 160, 170. Will be trying hard, but unfortunately the batters haven't been able to live up to the expectations. The batters had never been set there, and we've seen batters trying to do those extra things and experimenting out there, and as a result they have lost wickets at the top and completely have been put at the back foot at this stage, with PMS Panjipora driving the game nicely. As the match officials have called it for a short drinks break, we can talk about this innings of United Thapar. The batters, as I said, they have been in a hurry, they've been in a rush, and more often, when you're facing a brand new ball, the batters more often try to get well set first, to try to get their feet in, but the batters never try to do so. We'll try to get you the playing 11 of both the teams, as we have a bit of free time as the drinks break is going on. United Thapar, it's led by the captain Yusuf, who is out there, Akib Wani, But Junaid, Heather, Hisar lefty, Ishfaq Wani, Muhammad Salim it is, and we have Mushtaq Baba, Muzaffar, Saki, and Shoaib Para. Then we talk about PMS Panjipora. They have Saifuddin, Ashur Lon, Faisal Lon, Imu Imran, Irfan Ahmed, Kausar Sofi, Parvez Lon, Shafat, Shahid Ganai, Shaukat Ganai, and Tanveer Wani. So we got the playing 11 of both the teams, and PMS Panjipora will be a happier side, an elated side they are at this stage of the game. They know they have got the game well under their control. The bowlers have applied themselves there well, and the bowlers have done an exceeding job with the ball, have done a great job with the ball, and haven't let the batters of United Thapar to have a go out there and have that freedom, have that liberty of scoring big shots. And I said they have been kept quiet, runs out dried up, and more importantly, wickets at the top mean that United Thapar have been put under serious pressure. There is still a drinks break going on, as the players are taking a bit of time to get their respective positions. We still have got a ball to go in that final, in that 10th over at the halfway stage, as after the departure of Shoaib Para, who was well set there and played a small little cameo of 24 runs. And Muhammad Salim is the new man at number 6. And you talk about United Thapar, and they will try to find their feet now. There is still plenty of time left in the game, as Tanveer Mir will be bowling once again. He's in his first over, he's in his second over, 1 for 7 his spell, and the fielders marching towards the respective positions. And on the onside, no one is inside the ring. And you have the chance of picking those gaps. Yeah, those vacant spaces on offer on both the sides. So it's high for time for the batters to milk the ball in the gaps, to get the ball in the gaps. With those singles, you can build the partnership, you can build the innings and keep that scoreboard moving along as Salim gets ready to face. It's Javed Bhaiya watching us from Javed Electronics, Rahama. Thank you very much for being the part of this vital live streaming. In the meantime, Salim faces Tanveer for the first time. It's a slower delivery and a nice loopy one, as the batter just pushes it with soft hands on the offside, and he gets off the mark with a single, and it takes the score to 56 for the loss of 4. 56 for the loss of 4. Next ball outside off stump, tries to guide it away on the offside with an open face off the bat, and there is no addition to the total as the ball goes straight into the face. An extra bounce on offer, but the batter keeps it away on the offside, and there is no addition to the total.
At the halfway stage, 10 overs have been bowled, and PMS Panjipora will be a happier side. They will be an elated side with the ball, the way they performed. And the bowlers rising to the occasion, delivering a good performance, going at 5.6 runs per over. It's 56 for the loss of 4. शुक्रिया फिरदौस। 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और मजमूई स्कोर है यूनाइटेड तापर का 56, 4 विकेटों के नुकसान पर। सैफुद्दीन को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। पारी का 11वां ओवर फेंकेंगे और सामना करेंगे उनकी गेंद का मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम ने 1 रन बनाया है, जबकि मोहम्मद यूसुफ ने भी 1 रन बनाया है। सैफुद्दीन छोटे से रनअप के साथ गेंद की बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला। लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए, लॉन्ग ऑन बोनी से फील्डर आए और 1 रन बनाने का मौका। चहलकदमी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के इजाफे के साथ 57 स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर। सैफुद्दीन अपना दूसरा और पारी का 11वां ओवर फेंक रहे हैं। एक मरतबा फिर मोहम्मद यूसुफ के लिए गेंद की बैकफुट पर गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड की जानिब। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता पॉइंट पर, 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। चैंपियंस कप हाईगाम का ये जो है फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी हाईगाम के स्पोर्ट्स फील्ड पर। मंसूर डेकोरेशन हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे स्पॉन्सर है जावेद इलेक्ट्रॉनिक्स से जावेद हमारे साथ जुड़े हैं, जावेद इलेक्ट्रॉनिक्स रोहामा से। अगली गेंद ओवर द विकेट सैफुद्दीन की, छोटा सा रनअप, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद के उठा दिया है गेंद को और गेंद देखना होगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर के हाथ में। उन्होंने कोई गलती नहीं की और बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक अच्छा कैच हासिल किया और इस तरह से यहां पर मोहम्मद सलीम की इनिंग का खात्मा होता हुआ ये 5वीं विकेट गिरी है 58 के मजमूई स्कोर पर यूनाइटेड तापर की। यूनाइटेड तापर की 5वीं विकेट गिरी 58 के मजमूई स्कोर पर मोहम्मद सलीम के रूप में और मोहम्मद सलीम की विकेट गई सैफुद्दीन के खाते में। सैफुद्दीन 1.4 ओवर किए, 1 विकेट हासिल की और कुल मिलाकर 5 रन आए हैं अभी तक इनके इस स्पेल से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी की है अभी तक सैफुद्दीन ने। द किंग सैफुद्दीन 58 मजमूई स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर आधी टीम पवेलियन वापस जाती हुई यूनाइटेड तापर की सिर्फ 58 के स्कोर पर और 11वें ओवर का खेल मुकम्मल, बल्कि 11वें ओवर का खेल जारी है। अभी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी और नए बल्लेबाज आए हैं इशफाक वानी। 17 मैच में 111 रन और 39 उनका अभी तक का हाईएस्ट स्कोर। सैफुद्दीन बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार और नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए इशफाक वानी जो कि सामना करेंगे सैफुद्दीन की गेंद का। मजमूई स्कोर है 58, 5 विकेटों के नुकसान पर इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनाइटेड तापर का मंसूर जैबैया और अल्ताफ अहमद भट्ट जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर है हमारे साथ जुड़े हुए इस मुकाबले में। सैफुद्दीन नए बल्लेबाज इशफाक वानी के लिए छोटा सा रनअप, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद के ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद को खेल दिया है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से फील्डर आए। दोनों बल्लेबाजों ने इस दौरान दौड़कर 1 रन इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 59 हो चुका है। तो अगली गेंद एक मरतबा थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद बैकफुट पर गेंद को खेला बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने और एक मरतबा फिर चहलकदमी के साथ रन मुकम्मल होता हुआ 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 60 मजमूई स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर चैंपियंस कप हाईगाम का ये फाइनल मुकाबला और इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनाइटेड तापर का स्कोर। और यूनाइटेड तापर की टीम जो है वो कहा जाएगा कि इस वक्त दबाव का शिकार है क्योंकि 5 विकेटें गिर चुकी है महज 60 के मजमूई स्कोर पर और 11 ओवर्स का खेल भी मुकम्मल हो चुका है। अब देखना होगा तनवीर वानी को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर पीएमएस पंजीपोरा की जानिब से। इस मरतबा ऑप्शन से बाहर गेंद को खेल दिया है, फील्डर उस वक्त मौजूद लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। यह चौका आता हुआ मोहम्मद यूसुफ के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन की मदद से 64 हो चुका है 5 विकेटों के नुकसान पर।
5 विकेटों के नुकसान पर 64 स्कोर। अगली गेंद अच्छी गेंद, इस मरतबा उछाल लेती हुई गेंद, विकेटें कवर करके गेंद को खेलने की कोशिश, थाई को छूने के बाद गेंद विकेट कीपर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 12वें ओवर का खेल जारी। बॉलिंग मार्क पर है तनवीर वानी। अगली गेंद, इस मरतबा गेंद को निकाल दिया गली की जाने, फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ऑफ साइड पर अभी भी 6 खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी। तीनों खिलाड़ी जो ऑन साइड पर तैनात है वो बाउंड्री लाइन पर खड़े किए गए हैं, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फाइन लेग बाउंड्री पर और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। इस मरतबा लेग स्टंप से बाहर और गेंद को खेल दिया जब तक गेंद को फील्ड किया जा रहा, बल्कि वाइड बॉल का इशारा और बाई की सूरत में रन हासिल होता हुआ, कुल मिलाकर 2 रन का इजाफा, स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ 66, 5 विकेटों के नुकसान पर। तनवीर वानी बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार। 12वें ओवर का खेल जारी है। अगली गेंद बैक फुट पर गेंद को खेल दिया इशफाक वानी ने, फील्डर मौजूद लेकिन थोड़ा पीछे, और उस वजह से 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 67 स्कोर बढ़ता हुआ 5 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद यूसुफ सामना करेंगे तनवीर की गेंद का। गेंद को फॉरवर्ड आकर खेला, बैट और पैड साथ मिलाते हुए, और जब तक गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन बनाने का मौका, 1 रन के इजाफे के साथ 68 स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर। 12वें ओवर का खेल जारी है और 12वें ओवर की अगली गेंद, इस मरतबा ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश और गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं, थोड़ी देर हवा में लेकिन महफूज, और 1 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर 68, 5 विकेटों के नुकसान पर। 12वें ओवर की अब आखिरी गेंद फेंकेंगे, बल्कि गालिबन जो है ओवर मुकम्मल हो चुका है। जी हां, ओवर मुकम्मल हो चुका है। 69 है स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर। 12वें ओवर का खेल जारी है। 5 विकेटों के नुकसान पर मजमूई स्कोर है 69। गालिबन तनवीर के ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। अगली गेंद, इस मतलब ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेल दिया है, फील्डर उस ओर कोई तैनात नहीं, और गेंद 2 टप्पे खाने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। यह चौका आता हुआ इशफाक वानी के बल्ले से, और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 72 हो चुका है। 5 विकेटों के नुकसान पर 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल। इशफाक बल्कि तनवीर अहमद का यह ओवर जो है थोड़ा महंगा साबित हुआ। कुल मिलाकर इस ओवर से 11 रन आए इस ओवर से। अब सैफुद्दीन आए हैं बॉलिंग मार्क पर, अपना तीसरा ओवर फेंकेंगे, पारी का 13वां ओवर। अभी तक 2 ओवर किए, 7 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की सैफुद्दीन ने। सैफुद्दीन 13वें ओवर की पहली गेंद के साथ, गेंद की ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेल दिया, बड़ा खूबसूरत शॉट, और गेंद जो है गोली की मानंद बाउंड्री लाइन पार 4 रन के लिए। यह चौका आता हुआ मोहम्मद यूसुफ के बल्ले से, और 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 76 हो चुका है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोन मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सैफुद्दीन अगली गेंद के साथ मोहम्मद यूसुफ के लिए, इस मरतबा ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया है, लेकिन उस ओवर फील्डर तैनात, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का मौका, सिर्फ 1 रन मिल सकता है, और 1 रन के मजीद इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 77 हो चुका है 5 विकेटों के नुकसान पर। सैफुद्दीन ओवर में तीसरी गेंद के साथ, इशफाक वानी इस मरतबा सामना करेंगे उनकी गेंद का। गेंद के ऑफ बैक फुट पर गेंद को खेल दिया है, और 1 रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मुकम्मल। बड़ा अच्छा मैदान, खूबसूरत मैदान हाईगाम का स्पोर्ट्स फील्ड है, और डायमेंशंस के एतबार से मवाफिक मैदान T20 के लिए, और आउटफील्ड भी काफी ज्यादा तेज इस मैदान की। अगली गेंद सैफुद्दीन की, गेंद को ओवर पिच गेंद, जारिहाना अंदाज से खेलने की कोशिश, गेंद की लाइन को मिस किया, विकेट कीपर भी सफाई के साथ रोक नहीं पाए, और थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और इस तरह से यह डॉट गेंद। 77 स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 13वां ओवर जारी है। सैफुद्दीन अगली गेंद के साथ इशफाक वानी के लिए, जिन्होंने 6 रन बनाए 4 गेंदों का सामना करते हुए, बैटर पैड साथ मिलाते हुए मोहतात अंदाज से गेंद को खेला। नो बॉल का इशारा आता हुआ इस दौरान अंपायर की जानिब से, और इसका मतलब कि आने वाली गेंद फ्री हिट होगी और आजादाना स्ट्रोक खेलने का मौका इशफाक वानी के पास। क्या कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने में कामयाब होंगे? देखना होगा। इशफाक वानी के पास मौका यहां पर बड़ा स्ट्रोक लगाने का।
अगली गेंद सैफुद्दीन की, नो बॉल है, फ्री हिट गेंद और गेंद को उठा दिया है। गेंद देखना होगा एक टप्पा खाने के बाद क्या बाउंड्री को छू गई है। जी हां, और 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन की मदद से यूनाइटेड तापर का 83 हो चुका है 5 विकेटों के नुकसान पर। और सैफुद्दीन, इशफाक वानी और मोहम्मद यूसुफ के दरमियान ये पार्टनरशिप जो बिल्ड हो रही है, ये कहीं ना कहीं पीएमएस पंजीपुरा के लिए खतरनाक साबित हो रही है। 83 स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। सैफुद्दीन एक मतबा फिर इशफाक वानी के लिए 10 रन पर खेल रहे हैं 6 गेंदों का सामना करते हुए इशफाक वानी। एक मरतबा फिर सामना करेंगे सैफुद्दीन की गेंद का। बैकफुट पर गेंद को निकाल दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद, फील्डर को बीट नहीं कर पाए और रन बनाने का कोई मौका नहीं। 30 गज दायरे के अंदर गेंद को रोकने में कामयाब फील्डर। और इस दौरान जो है 83 स्कोर और कुल मिलाकर जो है 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल। And after 13 overs, they're 83 for the loss of 5 wickets. And you said it right, this partnership is growing nicely and is infusing life into this game, as they were 58 for the loss of 5. So that means a 25-run stand between these two for wicket number 6. And previous 2 overs proving to be very expensive, and it's costing them arms and legs now. And I guess there have been at least 26 runs being scored off the last 2 overs. 83 for the loss of 5, and for the first time in this game that current run rate has gone above 6. It is nearly 6.5 now, with 83 on board for the loss of 5. The captain out there batting on 14 of 13 bowlers, and Ishfaq Wani batting on 10. It will be over number 14 to commence from the commentary box, and Irfan has got the ball in hand. First ball, short and wide, and he goes over point. And the fielder at deep cover had no chance at all. One bounce and into the fence for 4. That was short wide outside off stump, and easy pickings for the batter as he flashes hard onto that one. Smashed and smoked over backward point, and the fielder at deep cover had no chance to stop the ball, and it goes one bounce into the fence for 4, giving them a bit liberty, giving them a bit freedom to score runs. We've seen PMS Panjipora, they bowled really well. Now this partnership is really infusing life into the this partnership is really getting them back onto that track where they can feel they can get up to 150, 160. And it looks really tough from here on, but if the batters get well set there, and it will be very easy for them to score runs. And this one is a better comeback from the bat bowler after being hit for a 4 of the first ball. The next 2 deliveries learns the lesson quickly and just pushes that one on the offside, and there is no addition to the total. We're in over number 14, and United Tapur has scored 88 for the loss of 5, with half of the side back into the pavilion. That's a good delivery again, a bit of a pace on offer as the batter goes off the back foot with an open face, guides it to third man, and the batter steal a single. With that, Yusuf is on strike, and Ishfaq Wani moves to 11 with that single. 89 it is. In the meantime, Irfan goes again. This time the batter nicely keeps the ball away to deep third man region. In fact, it's a wideish third man out there. And again the batters steal a single. That's a nice little phase going on for United Tapir. You know, the batters putting those bad balls away when they got a chance, and getting those singles quite easily. That's how the partnership is being built. That's how you build the innings together. That's how you build the partnerships. And it's been a great exhibition of this batting pair, focusing on rotating the strike, and you get a bad ball, you get a chance in an over, and then try to go for the big shot as well. And after 14 overs, it's 90 for the loss of 5. So 6.45 the current run rate if it is a 20 a game per side, and they can go up to 130. But they will be thinking beyond that, up to 150, 160. But for that they will have to keep wickets in hand, and will have to bat exceedingly well and have to attack in those final 3 or 4 overs to get those big overs. And the batters need to stay out there. It will be Kausar Sofi. He has been brought for the second spell, and he bowled an excellent spell in the power play. He bowled really well, 2 overs, 1 for 6 his spell. And he was just having a look at the field on the offside. He has third man out. He has that flying slip in place. Now the third man moves to deep point region,
and he's got that short third man inside the ring, and there is a sweeper cover, mid-off is in. So he cannot push the ball right up to the batter, he cannot bowl full to the batter, so he'll have to be on that good length area where you have place in the fielders. You'll have to bowl according to the field, even though he has long on, deep mid-wicket and deep scaleg out. But on the offside you can never bowl half volleys where when you have that mid-off inside the ring. So now to wait and watch how Kausar goes with his second spell. It has been an excellent spell in the first, where he bowled 2 overs, 1 for 6, and he was the man who got them the first wicket, who gave them the first wicket of the game. And goes to Ishfaq Wani with the second ball of his second spell. This has been nicely threaded a gap as he goes to the sweeper cover region. So I told you they're focusing on singles nicely for this partnership to build, for this innings to grow. It's important you score those singles quite nicely. And both the batters are doing it so good. It has been excellent phase with 92 on board as Kausar Sofi goes once again. And you see the batter was taking a couple of steps down the wicket, was trying to go right up to the pitch of the ball, but you see the bowler was pretty clever as he just slips in a slower delivery, a change of pace, as he forces the batter to be defensive, pushes it on the offside, straight to the point. Fielder, and there is no addition to the total. 92 for 5 in over number 15. As Kausar goes once again, a full ball onto the pad, as works it away to fine leg. And the fielder goes, tidies things up. Oh, a bit of fumble, and it allows the batters to come back for 2. And it could have been just a single, and the misfield allows the batters to sprint across the turf, and they have stolen a brace. It takes them to 94 for the loss of 5. We're in over number 15. And what is cooking in the mind of United Thapar? What will be they thinking at this stage with 5 more overs to go after that? And we'll be eyeing up to 150. That is where they can give the bowlers a chance to bowl upon that with open heart, with bowl. They can bowl with liberty, but I don't think 150 is going to be enough. And you never know in cricket, especially in a finals game. Again, slipping down the leg side, and the batter is so clever. Nicely pushes it away to the fine leg region. Bit of work for the deep scale leg fielder to do. And until he fielders the ball, it's a comfortable brace, it's a comfortable 2 for the batters, and moves the score to 96 for the loss of 5. 20. It's been a 37-run stand for wicket number 6 between these two, and keeping those hopes alive. And these two batters batting with ease, batting with confidence. Next ball, edge, and straight to that short third man fielder. It was short and wide. He could have easily left to the ball to the wicket keeper, and he flirts with that. The ball takes the edge and straight down to the throat of the fielder. A partnership has been. नशरियात को जरूर शेयर करें. वली मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं, साहिल दार हमारे साथ जुड़े हैं, सुहेल दार बल्कि सुहेल मजीद फ्राम चतलोरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. शबीर पाटे गुरु सोपोर से हमारे साथ जुड़े हैं. वली मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्मन रफीआबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए. और कौसर सूफी का ओवर जो है उसमें विकेट हासिल हुई थी मोहम्मद यूसुफ के रूप में, और मोहम्मद यूसुफ जो कि एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे अपने साथी बल्लेबाज इशफाक वानी के साथ, वो पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब हुए कौसर. साकी आए हैं नए बल्लेबाज, और इशफाक वानी जो है उनका साथ निभा रहे हैं. 98 मजमूई स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर. इरफान अहमद है बॉलिंग मार्क पर, अपना तीसरा और पाली का 16वां ओवर फेंक रहे हैं इरफान अगली गेंद के साथ. गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर उछाल लेती हुई गेंद, बैक फुट पर गेंद को जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश, नाकाम हुए बल्लेबाज इशफाक वानी, और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में. यह 16वें ओवर का खेल जारी है. 98 है मजमूई स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर. अगली गेंद ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया एक मरतबा, फिर बैक फुट पर बिना किसी फुटवर्क के खेलने की कोशिश, गेंद जो है सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में. तो 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल. 98 मजमूई स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस फाइनल मुकाबले में यूनाइटेड तापर का. अब देखना होगा मजीद 4 ओवर्स का आना बाकी है, और क्या टारगेट यहां पे सेट होता है पीएमएस पंजीपोरा के लिए. इस फाइनल मुकाबले में क्या टारगेट सेट होता है पीएमएस पंजीपोरा के लिए, ये देखना होगा. और दोनों बल्लेबाज जो है आपस में सलाह मशवरा करते हुए आप बिल्कुल तैयार.
दोनों बल्लेबाज अगले ओवर का सामना करने के लिए। अब देखना होगा किस गेंदबाज को, गालिबन कौसर सूफी को लाया गया है। वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर फेंकेंगे। पारी का 17वां ओवर, 3 ओवर किए, इससे पहले 12 रन दिए कौसर सूफी ने और 1 विकेट हासिल की। सुहेल डार, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज ऐप पर बैक वक्त देख सकते हैं। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, ओवर द विकेट, गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से फील्डर आए, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 99 हो चुका है 6 विकेटों के नुकसान पर। 99 मजमूई स्कोर। इशफाक वानी जो है वो सामना करेंगे, जिन्होंने 13 रन बनाए। 16 गेंदों का सामना करते हुए कौसर सूफी की गेंद का सामना करेंगे। गेंद की इस मतलब गेंद की रफ्तार को कम किया था, लेकिन परखने में कामयाब बल्लेबाज और गेंद को खेला हल्के हाथों के साथ 1 रन के लिए। 1 रन के इजाफे के साथ 100 रन यहां पे मुकम्मल होते हुए 100 बोर्ड पे आ चुका है। 6 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर का खेल जारी। 17वां ओवर पारी का फेंक रहे हैं कौसर सूफी। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, राउंड द विकेट, गेंद के हल्के हाथों के साथ खेलते ही दौड़ पड़े, रन मुकम्मल होता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के दरमियान सही तालमेल और आंखों में इशारा करते हुए ये रन चुरा लिया फील्डर से। 101, 6 विकेटों के नुकसान पर। इस फाइनल मुकाबले में तापर पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनाइटेड तापर की टीम। 101, 17वें ओवर का खेल जारी है। कौसर सूफी है बॉलिंग मार्क पर। दाएं हाथ के बल्लेबाज इशफाक वानी के लिए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की रफ्तार को कम किया था, लेकिन लाइन और लेंथ सही नहीं रख पाए और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर 1 रन का इजाफा मजीद स्कोर में और स्कोर बढ़ता हुआ 102, 6 विकेटों के नुकसान पर। कौसर सूफी बॉलिंग मार्क पर एक मतबा फिर अगली गेंद के साथ। इशफाक वानी सामना करेंगे उनकी गेंद का। अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई और खड़े खड़े खेलने की कोशिश। अंपायर की जानिब देखा कुछ देर के लिए बल्लेबाज ने, लेकिन कोई इशारा नहीं अंपायर की जानिब से। डॉट गेंद और अब जो है ओवर की 5वीं गेंद फेंकेंगे कौसर सूफी। बड़ा खूबसूरत, शानदार और अपनी टीम के लिए किफायती स्पेल फेंकते हुए और कौसर सूफी। अगली गेंद बैक फुट पर, गेंद को खेल दिया है, खेलते ही दौड़ पड़े और रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 103 हो चुका है। 3.5 ओवर किए कौसर सूफी ने, 17 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की कौसर सूफी ने। हमारे साथ शेख हारून जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल डार चितलोरा से हमारे साथ जुड़े हैं और रफियाबाद पेंटर्स ग्रुप से भी कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए साकिब बल्लेबाज है और सामना करेंगे कौसर सूफी की गेंद का। इस मतबा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई थी गेंद और कौसर सूफी का स्पेल मुकम्मल। 4 ओवर किए, 17 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। 17 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मजमुई स्कोर 103, 6 विकेटों के नुकसान पर। And a seasoned campaigner, Kausar Sofi is, and he's got all his experience into the game. An excellent spell. 4 overs, 2 for 17 in the final. This game has been a terrific spell with the ball. 17 overs gone, and they have 103 on the board for the loss of 6 wickets. With Saki batting on 3 and Ishfaq Wani batting on 15. 3 more overs to go, and the bowlers and the batters will look for those big overs, and the batters will look for those big overs now from here on. You need to get at least 150, and you'll have to score at least 40, 45 of upcoming those 3 overs. And with Ishfaq Wani sat there, and he has the responsibility, he has that chance to go big. And won't be easy again as these bowlers, the way they have utilized the resources well. And the bowlers have replied so well, utilizing the pace, varying the pace well, and they have been wicket to wicket so far in this game. Those 17 overs, they have completely taken full control of the game and haven't let United Tapa to score big. It's just 103 on board, and anything below 150 will surely be below par score. And the bowlers then in the second innings will have to do a terrific job to defend that one. In the meantime, it will be Imran with the first ball of his fresh spell, and he's off to the stumps, and he pushes that one away. A gentle push, and they steal a single. That single takes the score to 104.
Ishfaq moves to 15. It's Imo Imran. He's in his final over. He bowled 3 quality overs in the power play where he conceded just 7 runs. Although he hasn't got a wicket, but his figures have been exceptional. He has been spectacular with the ball, fantastic with the ball, economical stuff. In his 4 overs, in his 3.1 overs, none for 9 so far. And to the left-hander, now mid-on drops back, long on comes in. At mid-off, he has that catching position at short cover. He has deep point out and third man on the offside. And this is clever from the batter as he backs away and nicely guides it to the vacant third man area. Shot third man had no chance at all, and the ball trickles down to the third man boundary for 4. It's a welcome boundary to the left-hander, and it takes the tally of United Thapar to 108 for the loss of 6. Just backs away, a bit short delivery. He knew why the fielders were, just beats that fielder inside the ring, and all he needed to do was beat the fielder. And the lightning fast outfielder does the rest of the ball, races to the fence for 4. Imran goes again, and this time the batter tries to back away to guide it to the vacant third man area once again to get a single. He was playing for single, but doesn't get it off the bat, and he gets beaten. It doesn't connect at all, and there is no connection. And the ball goes straight into the gloves of wicketkeeper. Over number 18 in progress, and we have 2 more overs left after that. And Pirzada Shakil is watching from Delina with Rafiabad Panthers group, couple of overs watching as well. This one is short and wide as the batter was trying to come down the track to have a go at this. As I told you, it's that time for the batting side. You'll have to go big now. You'll have to find those big shots. You'll have to find those big overs. You know, just 2 more overs left after that, and you cannot leave it till then. In the meantime, Imran goes again, slave a full toss down the leg side, and he'll have to rebuild this as umpire signals wide, an additional run added to the score, and it takes them to 109 for the loss of 6 in over number 18. Still, I can say that PMS Panjipora will be a happier side, and anything below 150 they will take that and will fancy the chances of chasing the score down. Next ball, and he again leaves the stumps, exposing all those stumps. At the last moment, at the 11th hour, he just pushes it back along the track to the bowler. He goes on his follow-through and fielders, and there is no chance of a single. Still 109 for 6 with 2 more bowlers to go. With a ball to go in over number 18. Thank you very much, Pirzada Shakil, for enjoying the game, and thank you very much for your love and support. And it will be Imo Imran for the final time in his spell. That's a good shot ball, testing the batter with a terrific shot delivery, and he is beaten all ends up onto that, finishes his spell with a dot. 18 overs gone, 109 for the loss of 6. None for 13 in his 4 overs, Imo Imran. It has been a fantastic spell of fast bowling where, although as I said earlier, he hasn't got a wicket, but his figures speak louder than that, and has been spectacular. Has been fantastic with the ball. None for 13 in 4 overs in a T20 game. So he's done an exceeding job with the ball with just 2 more overs to go, and United Thapar will look to score quite quickly. They will look to score quite briskly now. And at least they will be hoping get 30-40 runs out of those 2 overs. The batters will have to go bang bang. They will have to go for those big shots, find those boundaries, find that boundary at will. Otherwise, you can end up with a below par score here. And in a finals game, you will be under serious pressure while defending that score. With the first ball, and this is up in the air, fielder there, and he drops the catch. It was very casual approach. He was very indolent out there. Straight in and straight out of his hand. A lazy effort there by the fielder, and the catch goes down. And with that, they have stolen 2 more runs, where it could have been a wicket and a dot. They have given away 2. So each and every run is very judicious. Each and every run counts from here on. You don't want to take the game lightly and put those catches down, especially that was so simple and should have been taken, but unfortunately it goes down and it concedes 2 more runs. It's 111 for the loss of 6. 10 more deliveries to go. Are those big shots coming for United Thapar? This is excellent bowling, terrific death bowling.
and the batters never finding the feed. The batters haven't found that mojo and haven't found those big shots until now. Just 9 bowlers left in the first innings. It's Nelson on board. 1-1-1 for the loss of 6. Next ball, and again it's a dot delivery. Can you believe it? It's the penultimate over. It's that 19th over, and just 2 runs have come off 4 balls. So you gotta give due credit to the bowlers of PMS Panjipora. The way they bowl, the way they reply to the critics after being asked to bowl first. It has been a hard-fought day for United Tapar. A single off the next ball. So just 3 runs off first 5 bowlers. An excellent stay, an excellent phase, a fascinating session of play. The first innings for PMS Panjipora, and the batters will be a happier side, and they will be really jubilant out there, elated and joyous, chasing anything below 130. And we'll take the chances. As I said, they will fancy the chances of scoring, of chasing this score down and to lift the title. This is up in the air, could be trouble, and it is caught at short mid-wicket. Saki departs. Was trying to go mid-wicket, up in the air, gets it high on the bat, and it goes straight to the fielder at mid-wicket. 1 more goes down. Irfan Ahmed has his first of the day. 19 overs gone. 1-1-2 for the loss of 7. शुक्रिया फिरदौस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 7वीं विकेट गिरी है। 18 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 112 मजमूई स्कोर, बल्कि जी हाँ 112, 7 विकेटों के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज आए हैं निसार लेफ्टी आए हैं नए बल्लेबाज। हिसार लेफ्टी है, बल्कि मैं माजरत चाहूंगा, हिसार लेफ्टी आए हैं नए बल्लेबाज। और देखना होगा इरफान अहमद ने 4 ओवर किए, 22 रन दिए, और कुल मिलाकर उनके खाते में 1 विकेट जाती हुई। हिसार लेफ्टी आए हैं नए बल्लेबाज। तनवीर वानी की गेंद का सामना करेंगे, बल्कि हिसार लेफ्टी जो है नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे। इशफाक वानी तनवीर की गेंद का सामना करेंगे। तनवीर पारी का 19वां ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार। पारी का 19वां ओवर फेंकेंगे। इनफरादी तौर उनका जो है 3रा ओवर होगा। इससे पहले 2 ओवर किए, 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल की तनवीर ने। मैं इस दौरान हमारे साथ जुड़े खान आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीरजादा शकील हमारे साथ दिलेना बारामूला से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज ऐप पर बैक वक्त देख सकते हैं। बॉलिंग मार्क पर है तनवीर और सामना करेंगे उनकी गेंद का इशफाक वानी के लिए छोटे से रनअप के साथ 19वें ओवर की पहली गेंद, और गेंद को जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश। ऑन साइड की जानिब गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, जो कि विकेटों के साथ चिपके हुए हैं। कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को कि वो कदमों का इस्तेमाल करे। अगली गेंद तनवीर की गेंद की एक मतबा फिर, इस मतबा हवा में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन सही गैप में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। दूसरा रन भी मुकम्मल, तो 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 114 हो चुका है मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। 19वें ओवर का खेल जारी। तनवीर अगली गेंद, और इस मतबा गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री से, फील्डर गए और बिल्कुल फुटबॉल खेल के एतबार से पांव से गेंद को रोकने में कामयाब, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब। इस दौरान मजीद 2 रन का इजाफा स्कोर में। 116, 7 विकेटों के नुकसान पर। इशफाक वानी 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 28 गेंदों का सामना किया और 1 मतबा फिर सामना करेंगे तनवीर वानी की गेंद का। तनवीर छोटा सा रन अप, 5 या 6 कदमों का। गेंद की इस मतबा गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब। एक टप्पा खाने के बाद गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कौसर सूफी के हाथ में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के इजाफे के साथ इस फाइनल मुकाबले में यूनाइटेड तापर का स्कोर 117, 7 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 8 गेंदों का खेल आना बाकी इस फाइनल मुकाबले में। हिसार लेफ्टी अब सामना करेंगे इस मुकाबले में पहली मर्तबा गेंद का सामना करेंगे, जबकि ये 19वें ओवर की 5वीं गेंद होगी। अभी तक इस ओवर से 5 रन आए हैं, 4 गेंदों पर 5 रन आए हैं इस ओवर से। 117 हिसार के लिए राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे तनवीर वानी। गेंद के ऑप्शन से बाहर और बाहर की जाने वाइड बॉल का इशारा, और स्कोर बढ़ता हुआ 1 इजाफी रन के साथ 118 हो चुका है। 118, 7 विकेटों के नुकसान पर। तनवीर वानी 1 मतबा फिर ओवर में 5वीं गेंद के साथ
सामने है हिसार, गेंद के बैट और पैड साथ मिलाते हुए पैड से टकराई, जोरदार अपील लेकिन कोई इशारा नहीं अंपायर की जानिब से। लेग बाय की सूरत में रन हासिल हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 119 हो चुका है स्कोर। अब आखिरी गेंद 19वें ओवर की फेंकेंगे तनवीर और सामना करेंगे इशफाक वानी। तनवीर वानी इशफाक वानी के लिए आखिरी गेंद के साथ गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जाने, फील्डर गेंद के पीछे बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, गेंद को रोकने में कामयाब, थोड़ा सा पंबल और उसके नतीजे में दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। दूसरा रन भी मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों ने किया। कुल मिलाकर इस ओवर से 8 रन आए, स्कोर 121। सिर्फ 19 ओवर्स का खेल था तो 122 रन जो है यहां जीत के लिए, बल्कि 20 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, मैं माजरत चाहूंगा। और 121 है स्कोर, अब 122 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। अल्ताफ किरमानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं मेरे होम टाउन से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रफियाबाद के चंद मंजे हुए सोशल एक्टिविस्ट में इनका नाम जो है शुमार होता है, हमेशा अपने इलाके की जो है बहबूद के लिए काम करते रहते हैं, और चाहे वो दीनी एतबार से हो या बकिया एतबार से, तो हमेशा पेश रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खान आदि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अंजर बट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जरा देर बाद जो है लाइव एक्शन के साथ हम दूसरी पारी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस वक्त आप सबसे इजाजत चाहेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलेंगे। Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the run chase of PMS Panjipora as the two openers are out there in the middle as the game has already started. We're in over number 1 and PMS Panjipora, they have scored 1 without loss. It's we're in over number 1 of the chase. Remember, they are chasing 122 in their allotted 20 overs, so that means it's a runner ball chase. 120 ballers to go, 122 to win, and it's really going to be a piece of cake if they get a good partnership at the top of the order, and will definitely be a piece of cake for the chasing side. And how those high chances of scoring those 122 runs to go over the line and to lift to the title. And Hisar lefty is operating from the commentary box, and the left-handed bowler, and Shaukat Ganai, Faisal Lun, the two openers. In the meantime, Hisar lefty goes round the stumps, and it's a bit quicker, a pacey length delivery outside off stump. And Shaukat Ganai was trying to have a go at it. He was flirting with that delivery, and he's a lucky man not to nick it behind as the ball goes into the gloves of wicketkeeper. First over of the chase underway, and the captain is just having a small little conversation with his bowler. What lines and lengths you need to bowl, and it's 122 to defend. I guess it's really a tough ask for the bowlers to defend the score in case if you get wickets up front. And that is where he can have the chances of coming back into the game. That's where he can have chances of defending that one. But if you let the top order batters to score runs, especially if they get a partnership out there, and it will be very tough for them to defend the score, and it will be, as I said, it will be a piece of cake for PMS Panjipora to chase down the score. It's 1 without loss in over number 1. And it will be the final ball of Hisar lefty's first over. Shaukat Ganai to face. It's wide outside off and has been signalled as wide. An additional run added to the score, 2 without loss. And from the beginning, the asking rate at the start of the innings is just a shade over 6. It's 6.2 runs per over. And in a T20 game, it's always Caterpillar, 10 wickets in hand. You will back yourselves to chase the score down. And well, as we talk about United Topper, and the bowlers will have to strike at regular times. Wickets in the power play will mean they will be into the contest. That's a good ball from Hisar lefty as the ball ships away, forces the batter to go for the booming drive. He was invited to go for the drive, and he accepts the invitation, goes for the drive, gets beaten, all ends up, and the ball goes into the gloves of wicketkeeper. A good first over from Hisar lefty where he kept to the batter's check, he kept to the batter's quiet. 2 overs in the first over, 2 runs in the first over, and there is no wicket yet.
In the finals game, United Tapar opted to bat first, and the batters were not able to step up to the occasion. The batters were not able to deliver, as the batting completely let themselves down, and they just managed at 121 on board, defending 122, and it will need them a special effort to defend this score or to bundle out the opposition under 122. It's going to be Mushtaq Baba, and he gets ready over the stumps with the first ball. The batter shows that intention, shows that aggression, goes down the wicket, but he is nowhere close to the ball, and gets beaten. The ball goes into the gloves of wicketkeeper. It is 2 without a wicket, 122 to get in the finals game, and if EMS Panjipora go over the line, they will be the champions of Hygam Champions Cup 2025. As Faisal Lun gets ready to face Mushtaq Baba. Now that's a good ball. That is a beauty of a delivery. Edged and gone. It is being taken behind the stumps. What a delivery that was. And with the feet rooted to the crease, Faisal Lun tries to punch it on the up, and he gets a thick edge to the keeper. He doesn't make any mistake, and it's a simple grab behind the stumps. First one goes down. That's what United Tapar need. If you have to defend that 122, you will need wickets at the top. You will need wickets in heaps inside the power play, and especially told you the power play is going to define the chase. Here is the first breakthrough for United Tapar as Faisal walks back to the pavilion, and he departs on a solitary single. He has scored, and early breakthrough. Mushtaq Baba delivers. He breaks through as PMS Panjipora find themselves on 2 for the loss of 1. Faisal Shabir is the first one commenting. Walaikum Salam. Faisal Shabir, welcoming you to the live stream. You're watching it on Global News Network on Facebook and JK Sports Discovery on YouTube. What a start this is. Got off to worst possible start here, PMS Panjipora. Well, you're chasing 122 runs. You're liking for a good start at the top of the innings. You will, even though if you go slow out there, if you score run a ball 36 inside the power play, but you just needed to save wickets, you just needed to preserve those wickets. But it's Mushtaq Baba who has done the job for the team, brought in as a bowling. He is bowling his first over in the second one off overall, and he has got the wicket. He has got to the edge of the bat and gone into the gloves of wicketkeeper Ashu at number 3 for PMS Panjipora after the departure of Faisal Lun. Mushtaq goes over the stumps and crisply driven on the up. Solid shot, and that will ease a bit pressure off the batter in finding the middle part of the bat, the first ball of the game you're facing. And you always go into the confidence, you always grew into the confidence. That was a nice looking shot. It doesn't yield any run as he finds the fielder, and there is no addition to the total. In the meantime, next ball, it's a full toss, clipped away in style. He finds the gap, but there is fielder backing up at the boundary ropes, and he just finds a single. It takes the score to 3 for the loss of 1. May I remind you, the live broadcast is brought to you by the official sponsors are BMZ Group Strakpura, Mansoor Decorations Rafiabad, and Al Maida Bakery Rohama. Here goes Mushtaq, shot in wide, outside off, and surely will be a wide, and he has to rebowl that. Shirajuddin is watching us. Walaikum Salam. He is watching from Panzla. Thank you very much, Mansoor Decorations, and Azad as well. Second over, and the score on board is 4 for the loss of 1. And United Tapar are defending a modest score of 122 runs here. And in case if they been able to defend the score, it will be really a blessing for them. This one is down the leg side. It's a bad ball and given away as wide, and 5 byes have been scored, and PMS Panjipora will take that. They will take it nicely, as they need runs to chase down the score, no matter where they come from, off the bat, off the pad, off the body, or those byes or leg byes. They will take each and every run here. 5 wides, and that takes the score to 9 for the loss of 1. Early breakthrough definitely for Mushtaq, but they will want more. This one is wide again, outside off stump, and he just tries to cover the line to guide it away on the offside, but an extra bounce completely does him as the ball goes
into the gloves of wicketkeeper. And Azad is mentioning that he's a quality all-rounder from Panjipora, talking about Ashu. And next ball to Ashu, that has been clipped away. That's a beautiful shot, wonderful strike. And they're using those supple wrists, clips it away in style, gets the boundary. It's a terrific strike, fantastic shot. 2 overs gone. It's 13 for the loss of 1. Slipping down the leg side, bowling onto the pads of a batter, always asking for a trouble when you got fielders inside the ring and no one patrolling the boundary line, and especially in the power play. You're definitely asking for trouble, and Ashu just clips him away in style and down to the boundary for 4. GM is watching the game, and Sirajuddin, I can mention you, it's PMS Panjipora in the finals taking on United Tapar. It's a title clash of Hygam Champions Cup 2025. It will be Hisar lefty to continue with the first ball of his fresh over, and this one with an angle face of the bat just guides it straight to backward up point, and either to the left to the right of the fielder. It could have been a run scoring opportunity, but he finds the fielder, and the batter definitely gets livid with that. When you're not able to find the gap and you just find those fielders. As Hisar lefty, he's back on the track, he's back on the top. Once again, the captain is just having a conversation, he's having a short little conversation with his bowler. And you need to bowl on the stumps, you need to target the stumps and just make the batter to commit a mistake here. You need wickets up front. In over number 3, it's 13 for the loss of 1. Mid-off inside the ring, short cover at catching position. There is cover, there is point, there is a flying slip and third man. This one, you can see the Hisar lefty surely has got a pace. But with that, you will have to bowl with control. You will have to keep that batter quiet and let that pressure in mount on the batting side. If you limit the scoring chances, if you don't give away those freebies at the top of the order. And it's been good start for Hisar lefty. Just 2 runs has conceded this man as he goes over the stumps once again, attacking the stumps as the batter is off the back foot. A gentle push on the offside as the captain goes on his own to stop the ball and denies any chance of a run. 122 to get in the finals to lift to the title, and they haven't got off to a good start as they lost Faisal on early. But for a second wicket here, they will look to get a partnership, they will look to score runs as Hisar lefty goes back once again to the right-hander Ashu. And Ashu tries to go down the ground, he gets an inside edge as a lucky man. It rolls down to the fine leg region. It's a good effort there by the fielder, he dives full length and saves a couple of runs for the team. He wasn't convincing though, wasn't confident there, he was trying to loft the ball straight over the bowler's head. And he's a lucky man as he didn't chop on back it to the stumps. It just goes mighty close to the leg stump and down to the fine leg. 2 more runs, 15 for the loss of 1. So 104 bowlers to go, 107 to win. In the meantime, Hisar goes again, and you see he's just creating that angle. He's bowling over the stumps, that left arm angle, as the ball just goes away from the right hander. There wasn't enough room, and he was just trying to steer it, run it down to third man, but fails to ride the bounce, and he gets beaten. And the ball just eludes the bat and goes into the gloves of wicketkeeper. 15 for 1 with the ball to go in over number 3, and Lund to face, who is batting on 3. And next ball, it's an extra bounce, and Lund was trying to go onside but doesn't connect at all. Connects thin air, defeated, has been completely beaten. 3 overs, 15 for 1. शुक्रिया फिरदौस। तो कुल मिलाकर 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 15 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर रन चेज में पीएमएस पंजीपोरा का। जीत के लिए दरकार 122 रन और अभी भी 17 ओवर्स का आना बाकी है, और यहां पर देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी होगी यूनाइटेड तापर की जानिब से। यूनाइटेड तापर ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बनाए और 122 रन का आदत मिला यह फाइनल मुकाबला जीतने के लिए पीएमएस पंजीपोरा को। इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे शौकत गनाई और आशु लोन, और आशु लोन ने
3 रन बनाए, शौकत गनाई ने 4 रन बनाए। बॉलिंग मार्क पर है मुश्ताक बाबा। चौथे ओवर की पहली गेंद पैड से टकराई और वहां पर गेंद जो है स्लिप की जानिब गई, जहां पर गेंद को फील्ड किया। काफी ज्यादा आगे गए थे आशु लोन रन लेने के इरादे से, लेकिन वापस अपनी क्रीज तक पहुंचने में कामयाब। जी हम मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तापर के हक में जो है सपोर्ट कर रहे हैं। देखना होगा सिराजुद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं, और इनके साथ साथ आज़ाद अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, साफ के लिए लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद जुड़ने के लिए। मुश्ताक बाबा चौथे ओवर की दूसरी गेंद के साथ सामना करेंगे शौकत गनाई। शौकत के लिए गेंद की बैकफुट पर गेंद को खेलने की कोशिश, उछाल लेती हुई गेंद, और गेंद गालिबन उनके ग्लव्स को छूने के बाद जमीन पर गिर गई। विकेट कीपर आए और उन्होंने जो है कांधा दबाते हुए शाबाशी दी मुश्ताक बाबा को, उनका हौसला बढ़ाया। मुश्ताक बाबा आहिस्ता आहिस्ता अब बॉलिंग मार्क की जाने वापस जाते हुए। मजमूई स्कोर है 15, 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी। यहां विकेटें हासिल करनी होंगी यूनाइटेड तापर की टीम को, दबाव बनाना होगा, तभी वो इस मुकाबले में जीत सकते हैं। अगली गेंद को खेल दिया है हवा में, शॉट देखना होगा हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल नीचे, फील्डर के हाथ में, और बड़ा खूबसूरत कैच हासिल किया, वेल जज कैच, और आखिरी लम्हात तक जो है निगाहें रखी और कैच हासिल किया फील्डर ने लॉग ऑफ बाउंड्री पर। तो ये दूसरी विकेट गिरती हुई 15 के स्कोर पर शौकत गनाई के रूप में पीएमएस पंजीपोरा की ये दूसरी विकेट गिरी है। बेहतरीन कैच हासिल किया, काफी ज्यादा ऊंचा शॉट था, लेकिन आखिरी लम्हात तक जो है निगाह गेंद पर रखी लॉग ऑफ के फील्डर ने और कैच हासिल किया। अब नए बल्लेबाज आए हैं परवेज लोन आए हैं, साथ निभाएंगे आशु लोन का, और सामना करेंगे मुश्ताक बाबा की गेंद का। इस दौरान हमारे साथ जमील अहमद जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिडन ब्यूटीज से बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वॉचिंग फ्रॉम श्रंसपाल बारामूला, बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद। और शाहिद राथर भी हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक अब्दुल्ला आलूसा बांडीपोरा से हमारे साथ जुड़े हैं जीएम मोहम्मद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज ऐप पर बैक वक्त देख सकते हैं। 15 मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर परवेज लोन आए हैं नए बल्लेबाज, सामना करेंगे मुश्ताक बाबा की गेंद का। और कहा जाएगा कि यूनाइटेड तापर की टीम जो है वो अभी तक इन इब्तिदाई लम्हात में दबाव बनाने में कामयाब पीएमएस पंजीपुरा पर। चौथे ओवर का खेल जारी, 15 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 122 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए, जबकि अभी भी 107 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, और कुल मिलाकर 75 गेंदों का खेल बाकी। बल्कि मैं माजरत चाहूंगा, अभी जो है कुल मिलाकर 18 ओवर्स का खेल बाकी है, बल्कि 16 ओवर्स का 99 गेंदों का खेल बाकी। 99 गेंदें, 107 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। बॉलिंग मार्क पर मुश्ताक बाबा, अभी तक कामयाब ओवर, 3 गेंदें फेंकी और विकेट हासिल की मुश्ताक बाबा ने यहां पर। और अब देखना होगा नए बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं टीम के लिए। मुश्ताक बाबा परवेज लोन के लिए गेंद को खेल दिया है, फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ऑफ साइड पर 6 खिलाड़ी तैनात किए गए हैं, 2 खिलाड़ी दायरे से, बल्कि 5 खिलाड़ी दायरे के अंदर और 1 खिलाड़ी दायरे से बाहर थर्ड मैन बाउंड्री पर, जबकि लॉन्ग ऑन पर ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी तैनात, सुकेल बाउंड्री पर फील्डर दायरे से बाहर, बकिया तमाम खिलाड़ी दायरे के अंदर। अगली गेंद मुश्ताक बाबा की, नए बल्लेबाज परवेज लोन के लिए, बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला मिड ऑन की जाने गेंद को फील्ड किया गया मिड ऑन पर, और रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। तो खाता खोला अपना मुश्ताक बाबा ने, स्कोर बढ़ता हुआ 16, 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर की अब आखिरी गेंद फेंकेंगे मुश्ताक बाबा। अभी तक कामयाब ओवर, सिर्फ 1 रन दिया और 1 विकेट भी हासिल की मुश्ताक बाबा ने इस ओवर में। आखिरी गेंद के साथ गेंद की रफ्तार को कम किया, हवा में शॉट, लेकिन उस ओवर कोई फील्डर तैनात नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। हालांकि 2 फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज, और गेंद 4 रन के लिए। और लोन मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोन मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वालेकुम सलाम। हमारे साथी है जमील अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हिडन ब्यूटी से हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हिडन ब्यूटीज इनका पेज है और शुंसपाल बारामूला से हमारे साथ जुड़े हैं। आप बॉलिंग मार्क पर हिसार को लगाया गया है, हिसार लेफ्टी और सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज परवेज लोन। हिसार लेफ्टी, परवेज लोन के लिए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद को सिर्फ बल्ला दिया, दो फील्डरों के दरमियान से होती हुई गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। परवेज लोन के बल्ले से आने वाला ये चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ पीएमएस पंजीपोरा का 24 हो चुका है। बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ परवेज लोन के बल्ले से। परवेज लोन जो है उनका इनफरादी स्कोर हो चुका है 4 बल्कि 5। ये पहला चौका आया परवेज लोन के बल्ले से। इनायत सल्फी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोन मुदस्सिर जुड़े हैं, गुलाम हसन मीर हमारे साथ जुड़े हैं जत्था रफियाबाद से, बट शहीम हमारे साथ मेरे होम टाउन से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने का। अगली गेंद जोरदार अपील, अंपायर पर इस अपील का कोई असर नहीं हुई। पीले मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा किस तरह से गेंद जो है पड़ने के बाद थोड़ी लेग स्टंप से बाहर हमें भी लगा, लेकिन देखना होगा विकेट कीपर बल्लेबाज जो है वो तकलीफ महसूस कर रहे हैं। गालिबन उछाल था गेंद में, जी नहीं, और ये आपको हमने रीप्ले में दिखाया। जोरदार अपील हुई थी लेकिन इस दौरान अंपायर का कोई जो है इशारा नहीं आता हुआ। लोन मुदस्सिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोन मुदस्सिर लिख रहे हैं कि मेरे पेज को भी फॉलो करें, जितने भी व्यूवर्स है मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट को फॉलो करें, तो फेसबुक पर इनका ये पेज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट शहीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे होम टाउन से हमारे साथ जुड़ने के लिए। महकमे एजुकेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हिसार अगली गेंद के साथ पीएमएस पंजीपोरा का स्कोर है 24, 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि यूनाइटेड तापर ने 121 रन बनाए थे। अगली गेंद को खेल दिया है, उस ओर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25। 5वें ओवर का खेल जारी। हिसार लेफ्टी है बॉलिंग मार्क पर। Scored in over number 5 and 25 runs on board for the loss of 2 wickets. Chasing 122 to lift the title, and it's been a worst start for PMS Panjipora as they lost 2 wickets. Hisar lefty goes once again, and with an angle the ball just goes away and he leaves it to the wicket keeper, just lifts his bat and lets it go, doesn't try to flirt with those deliveries. And although it has been an excellent start, but the worrying sign is for United Tapar is that they don't have enough runs in the bank where they can feel comfortable at. With 97 runs to go from here on of 92 bowlers, it's just a shade over 6 runs per over. Next ball, oh, that's a nasty delivery, and you can see the ball just kicks off the surface, and an extra bounce completely deceives the batter, and especially he just beats the wicket keeper as well, goes to the third man area, and there is no addition to the total. That was a venomous ball, a vicious bounce onto that delivery. Hisar lefty just cracking it up, and the batter was surely taken by surprise as the ball just goes past the gloves, and wicket keeper was beaten. No lengths up with the ball to go in over number 4. It's 25 for the loss of 2. Hisar lefty goes for the final time away from us, and he was giving him the charge. It was wide outside off stump, and there's still a quick single. Excellent running in the meantime, and a bye. One more run added to the score. 4 overs gone. 26 for the loss of 2. 96 to get of 90 balls. 96 रन दरकार, 90 गेंदों का खेल बाकी। 26 मजमूई स्कोर पीएमएस पंजीपोरा का 2 विकेटों के नुकसान पर। हिसार लेफ्टी ने 2 ओवर बल्कि 3 ओवर किए, 9 रन दिए हिसार लेफ्टी ने। नफीतुल्ली गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए हिसार लेफ्टी। लोन मुदस्सिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोटिवेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसका उनके पेज का लिंक उन्होंने शेयर किया है, तो आप पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप जो है इस पेज में बने रहे। बख्शी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम हसन मीर जतन रफियाबाद से। इनायत सल्फी हमारे वादी के एक अच्छे स्केयर है, इनायत सल्फी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनायत सल्फी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुकाबला इस वक्त जारी है हाईगाम स्पोर्ट्स फील्ड पर, शालीबाग स्पोर्ट्स फील्ड हाईगाम पर। हाँ, ये चैंपियंस कप हाईगाम का फाइनल मुकाबला। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 26 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर पीएमएस पंजीपोरा का
122 रन के ताकुब में। अब देखना होगा किस गेंदबाज को बुलाया गया है बॉलिंग मार्क पर। आकिब वानी को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। आकिब वानी अपना पहला और पारी का 5वां ओवर फेंकेंगे। आशु लोन उनकी गेंद का सामना करेंगे जिन्होंने 13 गेंदों पर 7 रन बनाए हैं। दोनों बल्लेबाज जो है आपस में सलाह मशवरा करते हुए हेलमेट लगाने में मसरूफ वहां पर परवेज लोन, और कुछ डगआउट से गालिबन मैसेज भी आया होगा। ग्लव्स तब्दील किए अपने बल्लेबाज ने, और देखना होगा अब किस तरह की बल्लेबाजी होगी। पहले ही 2 विकेटें गिरी है और 4 ओवर्स का खेल हो चुका है। सिर्फ 26 है मजमूई स्कोर। परवेज आशु लोन जो है बॉलिंग मार्क पर है और सामना करेंगे आकिब वानी की गेंद का। बॉलिंग में तब्दीली लाई है कप्तान ने, यूनाइटेड तापर टीम के कप्तान ने, और आकिब वानी को लाया है बॉलिंग मार्क पर। आकिब छोटे से रनअप के साथ अंपायर को क्रॉस किया, कदमों का इस्तेमाल इस मरतबा आशु लोन का, लेकिन गेंद जो है बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं। अंदरूनी किनारा लगा और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता शॉट स्क्वायर लेग पर, बल्कि शॉट मिड विकेट पर, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया। 27 स्कोर बढ़ता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। लोन मुदस्सिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप वाडोरा पाइन से हमारे साथ जुड़े हैं। और अब देखना होगा बॉलिंग मार्क से आकिब वानी अगली गेंद के साथ सामना करेंगे उनकी गेंद का दाएं हाथ के बल्लेबाज परवेज लोन जिन्होंने 6 रन बनाए हैं। आकिब वानी परवेज के लिए गेंद की लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से, और स्कोर बढ़ता हुआ 1 इजाफी रन के साथ 28 2 विकेटों के नुकसान पर। 28 हो चुका है मजमूई स्कोर। अगली गेंद ऑफ स्टंप से लेग स्टंप के आसपास और गेंद गालिबन पैड को छू गई। जी हां, लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से, स्कोर बढ़ता हुआ 1 इजाफी रन के साथ 29। शमीम हैदरी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शमीम हैदरी साहब आप तुलमुला गांधरबल से हमारे साथ जुड़े हैं। जाहिद सुनो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोन मुदस्सिर के साथ जुड़े हैं। इस दौरान गेंद को खेला और खेलते ही दौड़ पड़े, रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 30 2 विकेटों के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल जारी है। रन दरकार जीत के लिए 122 रन। आकिब वानी बॉलिंग मार्क से अगली गेंद के साथ और सामना करेंगे अब उनकी गेंद का परवेज लोन जिन्होंने 6 रन बनाए 6 गेंदों का सामना करते हुए। आकिब वानी ओवर में चौथी गेंद के साथ विकेटें छोड़कर गेंद को खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं और गेंद सीधे 6 रन के लिए मैदान से बाहर। ये दूसरी पारी में पहला छक्का आता हुआ परवेज लोन के बल्ले से और इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 हो चुका है पीएमएस पंजीपोरा का 2 विकेटों के नुकसान पर। 6ठे ओवर का खेल जारी। आकिब वानी है बॉलिंग मार्क पर और जाहिद सुनो बहुत बहुत शुक्रिया बुलगाम से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इनके साथ साथ शमीम हैदरी हमारे साथ तुलमुला गांधरबल से जुड़े हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस मतबा बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला वापस बॉलर की जानिब। ओवर मुकम्मल होता हुआ, बल्कि इस ओवर की अब आखिरी गेंद फेंकेंगे आकिब वानी। 36 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में कुल मिलाकर अभी तक 8 रन आए हैं। 8 रन आए हैं कुल मिलाकर इस ओवर में। अब ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे आकिब वानी, सामना करेंगे उनकी गेंद का परवेज के लिए कदमों का इस्तेमाल, 2-3 कदम आ गया है, बल्ला उनके हाथ से छूट गया और गेंद जो है उनके थाई को छू गई और ओवर इस दौरान मुकम्मल होता हुआ 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 36 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां पर पीएमएस पंजीपोरा का परवेज लोन 12 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि आशु लोन ने 8 रन बनाए हैं। So we're comparing both the sides, and it was United Tapper. They were in the same boat when they were batting the same situation. They were just 20 odd runs and they had lost 2 wickets as well. And while chasing 122, you don't need to take those unnecessary risks. You don't need to rush at the bowlers. It's a runner ball chase, and if you bat well, if you bat sensibly, you can scale the target. At this stage you're going 6 runs per over. And now the asking rate, 84 balls, 86 runs. So it's run a ball chase, it's 6 runs per over from here on. But you have to keep wickets in hand. 36 for the loss of 2.
after 6 overs, with Parvez Lund batting on 12 of 9 bowlers. And Ashu Lund has found it difficult to get going. It really has been a tough day for the batters. It has been a low scoring game. I talk about the first innings. They just scored 121 in their 20 overs. And in reply, they're going run a ball here, 6 overs and 36 for the loss of 2. And 86 runs to get out of 84 bowlers. It will be a bowling change. We'll have to wait and watch who has been introduced. Akib Wani has given 8 runs in his first over. And PMS Panjipora do have the chances, the more chances for them as this pendulum shifts towards the chasing side if they get a good partnership here. And they know the thing, it's not a big deal, it's not a big task, but cricket is the game of glorious uncertainties. Couple of wickets in a quick time, in a quick succession, will mean that there will be a lot of pressure on upcoming batters to chase the score. And there is that spice, a bit of spice in the wicket, which it is helping the bowlers at this stage. In the first innings, the bowlers enjoyed bowling, and in the second innings, it has remained the same. It looks like a good wicket for the bowlers, but it has got bit pace. First ball of the fresher as he pushes that one on the offside, and they steal a single. It was a gentle push, tap and run as both the batters just pointing in each other's eyes to steal a quick single. 37 for the loss of 2 with Zahid Sonu, and he's watching from Bulgam, and S. Bilal sending in love for PMS Panjipora. Mansoorul Islam, it's here at Shalibag, Hygam, Sopur, and it's the grand final of Hygam. It's the grand final of Champions Cup 2025. 7th over in progress, first ball a single, and that brings Parvez Lund on strike. He's batting on 12. Couple of big shots here will mean that the pressure which has been created on the batters, couple of big runs here will mean that the batters will find that groove, find that mojo, and this has been pushed on the offside, and again they steal a quick single. Good running between the wickets, and that's what you need to do, that's what you try to do out there. You are in, and you just try to put pressure on the fielders by scoring those quick runs, those singles. You're just stealing those singles, and this one was stolen right in front of the nose of the fielder, and takes the score to 38. Again, tap and run on the offside. That is excellent batting. It's a risk-free batting, just not trying to take those risks and not rushing at the bowlers. They understand the situation of the game, and they're playing according to the situation, and they themselves know that it's a runner ball chase, and all you need to do is stay there, get your feet in, and runs will come by when you get out there, and when you get a partnership. In the meantime, next ball, a bit of back length delivery, just goes off the back foot and gently pushes it to the cover, and there is no addition to the total. And Lon Mudassir has been the part of Global News Network as well. He's been the part of our commentary box, welcoming you to the live stream. And in case the viewers are watching the game, just follow the official handle of Lon Mudassir, that's Motivational Institution. Press the follow button as well, and in case you haven't followed the official handle of Global News Network, don't forget to press the follow button. And you're watching on YouTube's JK Sports Discovery. 7th over in progress, 40 for the loss of 2. In the meantime, Ishfaq Wani bowling his first as he goes for the final time, and defended on the offside, and they steal a quick single. 5 singles coming off this over, 7 gone, 41 for the loss of 2. And you've seen it has been a cool and calm approach in this chase after losing those 2 quick wickets. Both the batters now know the situation of the game. They understand that crucial juncture of the game. It's that stage where you can't afford to lose the wickets, where you just need a partnership to build an innings and get going. That required run rate is well under their control, and they can afford a couple of quiet overs here, but they cannot leave it till the end. And Lon Mudassir, whenever we have the time, we will definitely consider you, and in case if you get towards your area, towards Babagund or Baharampura, we'll definitely call you, but it's a far off place and will be a bit tough for you, and inshallah, if Almighty Allah wishes, we'll definitely call you up in upcoming matches whenever we get time. It's Parvez Lund batting on 14 and Ashu Lund batting on 11 as well.
7 overs gone, 41 for the loss of 2. They need 81 runs to win of 78 bowlers. So still an easy peasy chase for PMS Panjipora, unless an unnecessary collapse happens here. And we talk about United Thapar, they will have to pick wickets. Wickets will mean that they will be into the game, otherwise this partnership, if they get going, and will be tough for them to defend the score. And you cannot win this game by defending only. It's a fresh over and Akebani will continue. Arshulan going to face him. It's a nice little partnership going on for PMS Panjipora. The first ball of over number 8. Extra bounce there. You can see that has been the kind of a day where the bowlers more often, and sometimes the ball eventually jumps off the surface, and the batters definitely have that doubt into the mind, and they go double mind. In the meantime, next ball, down comes the batter, but he just tamely pushes it in the air. He was never in control of the shot, and luckily it goes wide of the fielder, and they steal a single. 42 for 2, 80 to get off 76 bowlers. So it's a simple equation for PMS Panjipora, just stay out there. But we talk about United Thapar, they need wickets unless the game will slip away. Akebani in his second over, none for 9. And it will be Parvez Lund to face. Over the stumps he goes to Parvez, and he was eyeing mid-wicket region. You see his eyes were somewhere else, and the ball goes ricocheting off the shoulder of the bat to the third man area. Batting has been a bit difficult on this wicket today, and has been a bit pacey, has been a bit extra bounce on there, and that is why the batters find it difficult to get those shots on, and that is why you can see just 120 were scored in the first innings. Again an extra bounce, and the batters steal a quick single, and the running between the wickets has been extraordinary. They're just stealing those singles right in front of the fielders. Although as I said, the batting has been a bit difficult. You see the balls are just kicking up the surface, and it is just creating that doubt into the mind of the batter, and it becomes tough to go off the front foot, and hitting through the line is becoming difficult. And there is that extra bounce. It's a 2-paced wicket, and again you can see it's a nasty one, just rears off the surface on a good length spot, and the batter cannot get away from the line of the ball, and he's a lucky man there. And high chances, high risks of getting injured. And when you see just trying to go and defend the ball off the front foot, as I said, it becomes really tough to hit through the line and to come off the front foot when you see the ball getting an awkward bounce. And it has been really a tough wicket to bat on for the batters. It has been a tough journey. You see Akebani just getting that extra bounce as the ball just kicks off the surface, and lucky that the batter had got his helmet on, and the ball just thuds him on the grill, and he is the man he just survives out there. 44 for 2, Akebani in the middle of a good over, and that is where the batter might lose his concentration after being hit on the helmet, and that is where the bowler can find a chance. He can create a chance here. Next ball, down comes the batter, up in the air, but it's well short of the fielder as the ball falls in no man's land. And over number 8 goes down as well. It's 45 for the loss of 2. बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस। तो 27 गेंदों पर 30 रन की शराकतदारी हुई है यहाँ पर परवेज लोन और आशु लोन के दरमियान, और कुल मिलाकर जो है स्कोर है 45 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद उछाल लेती हुई गेंद, अनइवन बाउंस हमने सुबह से ही देखा इस विकेट में, और यही वजह रही कि मैच में जो है यूनाइटेड तापर की टीम भी कोई अच्छा टोटल खड़ा करने में कामयाब नहीं हुई। 122 रन बनाए। इस मरतबा एक मरतबा फिर कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उछाल लेती हुई गेंद स्टंप्स के बिल्कुल ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में। 45 स्कोर है, और ये पारी का इस वक्त 9वां ओवर जारी है।
45 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग मार्क पर है इशफाक वानी, सामना करेंगे उनकी गेंद का परवेज लोन। परवेज लोन के लिए छोटे से रनअप के साथ ओवर द विकेट, गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया, फील्डर को आगे लाया गया है और रन बनाने का कोई मौका नहीं। 45 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। लोन फिरदौस लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे पिछले साल और इंशाल्लाह इस साल भी जो है हमें ज्वाइन करेंगे। अगली गेंद इस मतबा जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश ऑन साइड की तरफ, विकेट छोड़कर लेकिन नाकाम रहे और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार जो है डॉट गेंदें खेलकर दबाव बनाने की कोशिश गेंदबाज की जानिब से और अभी तक इस ओवर में 4 डॉट गेंदें गई है। अगली गेंद ओवर की 5वीं गेंद होगी, 9वें ओवर का खेल जारी, 45 मजमूई स्कोर, 6 के औसत से नीचे रन रेट जो है गिरते हुए। एक मतबा फिर उछाल और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार अंपायर की जानिब देख रहे हैं, अब अंपायर की जानिब से 1 बाउंस का इशारा जो है आया है। इशफाक वानी है बॉलिंग मार्क पर, इशफाक वानी अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, अभी तक 5 रन दिए इशफाक वानी ने। इशफाक ओवर में आखिरी गेंद के साथ 5 डॉट गेंदें अभी तक इस ओवर से फेंक चुके हैं इशफाक। कदमों का इस्तेमाल और इस मरतबा 6 रन के लिए गेंद मैदान से बाहर। बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला गया स्ट्रोक और इशफाक वानी के बल्कि ये परवेज लोन के बल्ले से आने वाला छक्का। इन 6 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 51 हो चुका है। 51 मजमूई स्कोर, 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल। कुल मिलाकर 5.50 की औसत से रन आ रहे हैं, जबकि 6 की औसत से रन जो है इब्तिदा से ही रन रेट थी। और अभी कुछ कहना जो है कि मैच में अभी बनी हुई है पीएमएस पंजीपोरा की टीम, क्योंकि अभी उनके पास 8 विकेट मौजूद है। रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 54 गेंदें हैं और बल्कि 66 गेंदें हैं और रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए कुल मिलाकर 71 रन चाहिए। 66 गेंदों का खेल बाकी, करीब जो है रन और बॉल चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए पीएमएस पंजीपोरा को। बॉलिंग मार्क पर इशफाक वानी का ओवर जो है मुकम्मल होता हुआ अब देखना होगा किस गेंदबाज को बुलाया गया है। ये 10वें ओवर की पहली गेंद हल्के हाथों के साथ खेला, फील्डर उस ओवर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। आके वानी है बॉलिंग मार्क पर, आके वानी यूनाइटेड टापर की जानिब से बॉलिंग कर रहे हैं और सामना करेंगे उनकी गेंद का आशु लोन। आशु लोन ने 21 गेंदों का सामना किया, 13 रन बनाए। परवेज लोन ने 21 गेंदों का सामना किया और 22 रन बनाए। लोन मुदस्सिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोन मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद के साथ आकर सामने है आशु लोन के लिए वो द विकेट, गेंद की बैक फुट पर ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा और गली में फील्डर मौजूद, इस दौरान रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और रन मुकम्मल होता हुआ। अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो नज़दीकी मामला बनता, लेकिन खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज गेंद सीधे स्टंप्स पर जाके नहीं लगी। आके लोन आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जाने वापस जाते हुए ये 10वें ओवर का खेल जारी है। आके ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे, एक मतलब फिर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उछाल और विकेट कीपर जो है पंजों पर उछल कर गेंद को रोकने में कामयाब। आहिस्ता आहिस्ता अब एक मतलब फिर बॉलिंग मार्क की जाने वापस जाते हुए गेंदबाज आखिर वानी सामना करेंगे एक मतलब फिर परवेज लोन, जिन्होंने 22 रन बनाए 22 गेंदों का सामना करते हुए और एक खूबसूरत सा छक्का भी उनके बल्ले से देखने को मिला। आखिर बॉलिंग मार्क से एक मतलब फिर अगली गेंद के साथ वो विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेला हवा में शॉट, लेकिन उस ओवर कोई फील्डर तैनात नहीं, देखना होगा। और गेंद 6 रन के लिए अंपायर की जानिब से इशारा आता हुआ, 6 रन के लिए ये छक्का आता हुआ परवेज लोन के बल्ले से। परवेज लोन के बल्ले से ये छक्का आया है और इन 6 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब कुल मिलाकर हो चुका है 58, 2 विकेट के नुकसान। लोन मुदस्सिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोन मुदस्सिर जो है लोन
लोन मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इस दौरान जो है हमारे साथ फारूक वानी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यहां से आप सब व्यूवर्स को जानकारी देना चाहूंगा, 58 है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। आके वानी 10वें ओवर की अगली गेंद के साथ परवेज लोन के लिए इस मरतबा गेंद को हल्के हाथों के साथ ऑन साइड की तरफ खेलने में कामयाब और 1 रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 59 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से जो है कुल मिलाकर 71 रन चाहिए, बल्कि 73 रन चाहिए और गेंदें बाकी है 60, बल्कि मैं माजरत चाहूंगा कुल मिलाकर जो है 63 रन चाहिए, 60 गेंदें बाकी है। And at the halfway stage, they have 59 on board. But we talk about the wicket. It has been really a tough going for the batters. Hasn't been easy to bat out there in those tough conditions. But these two batters somehow have managed to survive. With Ashul Lon on 14 of 22 and Parvez Lon batting on 29 of 25. It's a crucial partnership for PMS Panjipora. As you know, there has been a bit of extra bounce on offer and the ball just kicks off the surface, especially that good length area. That is where the bowlers have been troubling the batters continuously. Thank you, Lun Mudassir, for providing the information, and Pari Tariq and Javed traders are watching the game in the middle of a drinks break here. I think the game is evenly poised. It's hanging in balance at this stage. 63 to get out of those 60 bowlers. And you know the way the wicket has behaved. As I told you, it has been a low scoring game and it has completely been in favour of the bowlers, especially the pace bowlers, using the pace of the wicket, the spice of the wicket. And has been really a tough day for the batting side. But you know, PMS Panjipora, if they take the game deep, they're definitely going to go over the line and they will carry the day. But still, I think that United Tapur will have to work hard. They will have to come up with new plans against those batters. Everything they're throwing at them, they're responding it in style, even though runs are not coming that too fast for them. As I thought they could have chased down the score inside 14-15 overs, but looks tough because it has been a tough going and tough outing for the batters in the middle of a short drinks break. 10 more overs to go, and to lift the title, to become the champions, they will have to score 63 more runs, whereas United Tapur will be trying hard to get those 8 wickets quickly. You know, 60 balls in a T20 game and 6 runs per over with 8 wickets in hand. You're going to bat on a batting side, but you never know in cricket. Couple of wickets in quick time, couple of quick wickets, and they will be straight away back into the game. At the halfway stage, and even though United Tapur, they haven't given away way too many runs, they haven't, those doors aren't wide open for PMS Panjipora yet, but just got those 2 wickets. Had they got 4 or 5 wickets, this could have been very interesting game, knowing that the batting has been very tough on this surface. Has been really a tough day for the batters. You know, in the first innings, all those 20 overs were bowled and the team just managed 121 runs. And in reply, you can see going at snail's pace, 59 for 2. And still waiting for the drinks break to finish off. Thank you very much, Lun Mudassir. And has been, it really is sizzling hot and humid from couple of days, and it becomes tough to broadcast those games. As you know, more often your gadgets get heated up, you get completely dehydrated, and we need to keep ourselves hydrated as well. And in the meantime, United Tapur just having a conversation into the middle of a conference. What they need to do from here on, as I told you, it's just one way. You'll have to pick wickets. You'll have to get those wickets in a quick time, especially 2 or 3 wickets inside those 2 or 3 overs. That's why they can come back in the game. That's why they can have those doors wide open to be back into the track. Otherwise, with each passing over, you could slip away further, and you know, it will be very late to be back into those final overs. And now I can see, I can witness the fielders are going back to their respective positions. As the drinks break is over, and the bowler just getting up to have his fielders at the positions where he wants them. And the second phase of the game, of the second innings, begins from here on.
The one who holds the nerve, the one who soaks the pressure will go over the line and will seal the deal and will be the champions. Allowed to wait and watch next 10 overs and we will get the champions of Champions Cup Hygam 2025. Both the teams fighting it out neck to neck, and you can see even though they know they have just 121 on board, but they're still fighting it out, still breathing it out and sweating it out in the middle. Ishfaq Wani has been introduced into the attack. He has conceded 11 runs in his 2 overs. Parvez Lone and Ashu Lone, they have definitely stayed out there. They have just kept the bowlers at bay, haven't let the bowlers to dominate the batting side. But still, I still feel the game is hanging in balance. It's a balanced game at this stage. As I told you, a couple of wickets in a quick time. It'll mean that they will be back into the contest. First ball down the leg side. It's a half tracker and put away in style down to the scallop boundary for 4. A bad delivery to start. It's a terrible ball to start. He picks the bones out of this one and he absolutely smashes that one away into the fence for 4, and that will do it. That will do it nicely for the team. Shot down the leg side, no fielder at the boundary, and easy pickings for the batter. Next ball, and he is clever, just guides that one with open face off the bat. Rollers down to the third man and will get a single. Takes the score to 64 for the loss of 2. So 5 coming off first 2 bowlers. It's a runner ball chase. 58 bowlers, 58 runs with 8 wickets in hand. As I told you, it will need United Tapper a special effort from here on, a miraculous effort from here on to defend the score and to get all those 8 wickets. Ishfaq none for 16 in his over number 3. As he's just setting the field, brings that third man a bit wider. And he goes to Ashulun over the stumps. It's a drag down again, but Ashulun just works it fine. They have a fielder now until he tidies things up. They get a single, a vital 50-run stand for wicket, third wicket, and has brought them back into the game. It's a crucial stand at the crucial juncture of the game. At this stage, Panjipora needed it desperately, and these 2 batters have delivered. And again, onto the pad, just tickles that one fine. And he's bowling onto the pad as well. He has got protection on the offside. That's bad bowling. When you got fielders on the offside, you need to bowl according to your field. You need to bowl according to the fielders you have. He's got good protection, a packed offside field, a third man out, deep cover out and long off out as well. As he goes once again down the track, goes the batter and it goes down at short mid-wicket. A chance was created. It was a tough one though, as the ball was travelling at the rate of knots. And he got less time to react and pops out of his hand. It's half a chance and it goes down. How costly this one is going to be, as the fielder at short mid-wicket, I guess it's Mushtaq Baba who put down the catch. Next delivery. And that's a good ball to finish over number 11. 66 for the loss of 2. So 55 balls to go and they need 56 runs to win. A chance was created by Ishfaq Wani in that over, but that fielder at short mid-wicket got less time to react. Even though he got both hands to the ball, that was a tough chance. And the ball just pops out of hands and he gets the reprieve, he gets the life to continue. As I told you, it definitely is going to cost them arms and legs. It's going to cost them a match here. A chance was created. And you know, you just need to convert those half chances into full ones to be back into the game. You're defending a low chance, you're defending a low target, and you need it to be on the toes. You just need to be as agile as cat in the field. You need to be electric in the field and convert those half chances into full one. But the catch goes down and the batter gets the life. It will be over number 12, and Akif Wani is going to continue. Still, I can believe that this game is in balance. This game is still in for both the teams. But still that advantage, still have got a bit of advantage, upper hand, I can say, PMS Panjipora. With wickets in hand in a T20 game, runner ball chase. As I told you earlier that you'll always bat on the batting side. And 54 balls it is, 56 the equation with 8 wickets in hand.
Ishfaq Wani, 3 overs, none for 18. And off his bowling, a catch has gone down. And we still have got a ball to go here. We'll have to wait and watch. One ball to go in this over. After 10.5 overs, it is 67 for the loss of 2. With a good partnership, 51 between these two for third wicket. And it has brought them back into the contest. Those early jitters, they lost those 2 wickets quite early in the chase. It was Mushtaq Baba who was wrecking havoc at the top of the order in his 2 overs. He got 2 wickets with the final ball of over number 11. And Edge just short off that shot, third man fielder. He was deliberately hitting it in the air. At the last moment, he just tucks the ball on the offside. And he is lucky man. And the ball drops short of the fielder. A single off the first ball, 68 for the loss of 2. With 54 runs to get off 53 bowlers. As Akif Wani goes once again. This is up in the air. There is the chance. This could be trouble, and wicketkeeper completes the catch. An extra bounce does the trick. The batter was coming down the wicket, gets it high on the bat, and doesn't get enough power behind the shot. The ball just goes in the air. It will skyer, and wicketkeeper gets right under the ball, gloves on, and he completes a catch. Finally, the partnership has been broken. Finally, they hold on to the catch. And the wicket which they desperately needed has caught. It is Akif Wani who's broken through the stand. And here is the wicket. That is what they needed to break the partnership. It is Parvez Lon who has to take a long walk back to the pavilion. And I can say absolute ecstasy for the side of United Tapar. And devastation, disaster for PMS Panjipora, as the partnership which was bringing them back into the game has been broken. And Parvez Lon, after staying there for he was working hard, he was biting the bullet, but all of a sudden he was coming down the wicket, tries to go hard at the bowler, tries to go mighty at this one, doesn't cover the bounce. And this has been the problem as the batters have been facing regularly. Their extra bounce has completely troubled the batters, and he wasn't able to ride the bounce. He wasn't able to keep the ball down, up in the air, and wicketkeeper completes the catch. 68 for 3, 52 bowlers to go, 54 runs to win. And it promises to be a breathtaking encounter if a couple of wickets go down in quick time for a United Tapar, and they will be soaring back, they will be roaring back into this game. And they definitely need wickets here. To talk about PMS Panjipora, again the partnership of 30-40 runs, and they will be rightly back into this one. They will be ruling the game, but until now we cannot decide yet who is going to win the game. It has been a seesaw battle, it has been a tipsy-topsy game, and both the side is fighting it out, both the side is not letting the game to go away. And here is that wicket which they needed, and we mostly have seen in cricket, one brings another, and Akif Wani will fancy the chances. The way he has bowled, he's getting that extra bounce, he's getting that help from the surface, getting that help from the wicket, and he has been the man who is continuously troubling the batters. After the departure of Parvez, the new batter is in at number 5, faces Akif for the first time, and he neatly puts the ball away, pushes it with gentle hands down to the point region, and there is no addition to the total. Shafat it is. And after 11.3 overs, it's 68 for the loss of 3. An incredible game going on. A game which is hanging in balance, which is in balance at this stage. And both the teams have equal chances now. It's Azan time going on. The call to prayer is going on as we were going to take the microphones down for a while. What is this?
Tu ficatas ganhando vicharas, cadê que é a MC मिले मगर ज़्यादा MC से बाला ज़्यादा और खसा Ausa pat expert da ausa kim Pani jai mi dan vitis ba सत्र बनाना छोटा मेरे बस लेग साइड बॉल इन ट्रैप पे लेग साइड देख है कह देते हैं हमारे इनको ऐसे बनाऊं तो सेटअप कौन होगा बाहर ये जो है तो 5 बाबू
Wish Rosbani, wish what's in Ruler ten devas. Ilna ruler te zanjut. Ada jna ruler te. Na te ruler. Atar Abdin Pamatelas. Carlos Abdin so Not other boy trawn, boy produce for roller. Yosikana parası mesela komentuyor. Kus. Sefiyat enrevo. Sefiyat enrevolas. Az geldi ama. Karan ya maza ya entry. Maza ya komentuyor maza. Johnson. Johnson. It is. Maza ya. ये गोल छिपा गए विकेट होता असल पाता है मुझ फिर ते में आया था ये साला वन पात गया لا تكرون Go गया. हाँ. كذا سكت भाई كذا سكت جاي رامي برا مانو Titoji bal artoji run. मुश्किल ना चल तो ये बड़ा नहीं बने गाड़ी करा तू तो गाड़ी करा वो क्यों कर रहा है उसने मिसाल बड़ टीम गिनने तुम गिन मैच आख पर दिन तुम ऐसे पर टूर्नामेंट पहुंचे को था ऐसे मन गिनने यो तरफ का चमाज मैच वे ते को बकवास एक पर उस वक्त वो शिरा का बॉल दो रोज यूज दो अगर बैट्समैन तुम मैंने पूछ दे मैं मजा पूछ सुबह आप तुम काश लाया हां स्काउसर काश लाया थोड़ा करना काश लाया शुद्ध काश सोच न होत पर करा नर के मतलब ट्राई पता है सोच तो हमें सदी ये पे पतला है तो इतना स्लोवर तो फास्ट वन से यार ताक हुई ना दे ये टेंशन मोल गई जानो हां ये परेशानी है मोल गई जानो ऐसा तो चलना है जी मोल कप्तान ताबरस मोहम्मद यूसुफ शायद मोहम्मद यूसुफ होता कप्तान तो यूसुफ क्रिकेट उस पर यूसुफ कोई
De game hoje, hein? तो अजान का वक्फा मुकम्मल होता हुआ एक मतलब फिर हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। 77 मजमूई स्कोर है 5 विकेटों के नुकसान पर। यह 14वें ओवर का खेल जारी है। टारगेट यानी जीत के लिए दरकार जो है 122 रन का हदफ मिला था और अभी भी 78 स्कोर है 5 विकेटों के नुकसान पर और कुल मिलाकर जो है यहां से 44 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, जबकि कुल मिलाकर गेंदें बाकी है 40 गेंदें और 44 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए पीएमएस पंजीपोरा को। छोटा सा रनअप गेंदबाज का ऑप्शन से बाहर की जानिब जाती हुई गेंद और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 79 हो चुका है। जीएम मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं शाजी अरशद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छी गेंदबाज है मोहम्मद यूसुफ जो कि टीम के कप्तान है, वो इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं यूनाइटेड तापर के लिए। 79 स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर 14वें ओवर का खेल जारी। बैकफुट पर विकेट कवर करके गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड की जानिब। फील्डर उस ओवर मौजूद, उसके अलग बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया गया। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के मजीद इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 80 5 विकेटों के नुकसान पर पीएमएस पंजीपोरा का। 42 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 38 गेंदों का खेल बाकी। मोहम्मद यूसुफ छोटे से रनअप के साथ इरफान अहमद के लिए अच्छी गेंद ऑप्शन से थोड़ी बहुत बाहर और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जो कि विकेटों के साथ चिपके हुए हैं। अब ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे मोहम्मद यूसुफ। ये 14वें ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद यूसुफ एक मतबा फिर और इस मतबा गेंद को खेलने में कामयाब। फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। तो 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मजमूई स्कोर है 80 5 विकेटों के नुकसान पर। 44 गेंदें और 44 रन चाहिए। 42 गेंदों का खेल बाकी है। जीएम मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं शाजिया अरशद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीएम मोहम्मद जो कि यूनाइटेड तापर टीम के हक में जो है अपना सपोर्ट जो है कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज ऐप पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी, फेसबुक पर ग्लोबल न्यूज नेटवर्क और इसके अलावा क्रिक हीरोज ऐप पर भी आप हमें देख सकते हैं। इरफान अहमद और शाहिद गनाई इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं पीएमएस पंजीपोरा के लिए। इरफान अहमद ने 1 रन बनाया, 6 गेंदों का सामना किया। शाहिद गनाई ने 5 गेंदों का सामना किया, 3 रन बनाए। अब यहां से 36 गेंदों का खेल बाकी और रन दरकार 44 मुकाबला जीतने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लाइव नशरियात में हमारा साथ निभाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मोहम्मद यूसुफ के बाद देखना होगा किस गेंदबाज को बुलाएंगे और उधर विकेट कीपर के साथ कुछ गालिबन वो अपने पैर जो है वो दुरुस्त करते हुए अब बिल्कुल तैयार। बल्लेबाज जो है बल्लेबाज थे वहां पे और उन्हें कुछ डगआउट से मैसेज भी आया है दोनों बल्लेबाजों के लिए। गालिबन ये मैसेज होगा कि विकेटें बचा के रखें और ज्यादा से ज्यादा रन हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आखिरी लम्हात पर अगर आपके लिए ओवर्स में 7 या 8 की औसत बन जाएगी तो उस सूरत में जो है फिर मुश्किलात बढ़ जाएगी। इरफान अहमद 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया, जबकि शाहिद गनाई ने 3 रन बनाए 5 गेंदों का सामना करते हुए। इधर बॉलिंग मार्क पर अब किस गेंदबाज को बुलाया गया है ये देखना होगा। मोहम्मद यूसुफ ने अपने पहले ओवर में 6 रन दिए, जो पारी का 14वां ओवर था। मोहम्मद यूसुफ टीम के कप्तान ने फेंका। यूनाइटेड तापर
और पीएमएस पंजीपोरा के दरमियान शालीबाग चैंपियंस कप का जो है ये बड़ा अहम मुकाबला। इस वक्त कांटे की टक्कर दोनों टीमों के दरमियान। अब बॉलिंग मार्क पर मुश्ताक बाबा को लाया गया है, सामना करेंगे उनकी गेंद का शाहिद गनाई। 15वें ओवर की पहली गेंद पड़ने के बाद काफी ज्यादा अंदर की जाने आती हुई और विकेट कीपर जो है डायल लगाकर गेंद को रोकने में कामयाब। पहली गेंद 15वें ओवर की डॉट गेंद साबित होती हुई मुश्ताक बाबा आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जाने वापस जाते हुए सामना करेंगे एक मतलब फिर उनकी गेंद का शाहिद गनाई। मजमूई स्कोर 85 विकेटों के नुकसान पर। मुश्ताक बाबा ओवर में दूसरी गेंद के साथ शाहिद गनाई के लिए गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया है, फील्डर उस ओर मौजूद लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे और एक रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ एक रन के इजाफे के साथ 81। 34 गेंदें और रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 43 रन चाहिए। 34 गेंदों का खेल बाकी और बल्कि 42 रन चाहिए, मैं माजरत चाहूंगा 41 रन चाहिए। अगली गेंद ओवर द विकेट मुश्ताक बाबा के ऑफ स्टंप से बाहर और जायहाना अंदाज से खेलने की कोशिश इरफान अहमद की, लेकिन गेंद जो है उछाल लेते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद इस ओवर की। 3 गेंदें फेंकी है मुश्ताक बाबा ने इस ओवर में और सिर्फ 1 रन आया है। और अब ओवर की अगली गेंद के साथ सामने आए शाहिद गनाई। गेंद की बैक फुट पर खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद विकेट कीपर सफाई के साथ रोक नहीं पाए और बाई की सूरत में रन हासिल होता हुआ, बल्कि बल्ले को छूने के बाद गेंद जो है विकेट कीपर की जानिब गई थी। 82 हो चुका है स्कोर। 40 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और गेंदें बाकी है 32 गेंदें 40 रन, काफी नजदीकी मुकाबला। मुश्ताक बाबा ओवर में अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे गेंद की और इस मरतबा बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया। फील्डर उसको मौजूद, क्या रोक पाएंगे? जी हां, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब रोकने में कामयाब। इस दौरान दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, तो 2 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 84, 5 विकेटों के नुकसान पर 31 गेंदों का खेल बाकी। 38 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए पीएमएस पंजीपोरा को। यूनाइटेड तापर की जानिब से बॉलिंग मार्क पर मुश्ताक बाबा ओवर की आखिरी गेंद के साथ। इस ओवर से कुल मिलाकर अभी तक जो है 4 रन आए। 38 रन चाहिए, 31 गेंदों का खेल बाकी है। अब शाहिद गनाई एक मतलब फिर मुश्ताक बाबा की ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। गेंद की अच्छी गेंद, उछाल लेते हुए गेंद और आखिरी लम्हात पर गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए शाहिद गनाई ने। ओवर मुकम्मल, 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 84 स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर। रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 38, 30 गेंदों का खेल बाकी। And it's coming closer and closer now, becoming intense with 30 balls to go and they need 38 runs to win. 84 for the loss of 5. Mushtaq Baba has bowled 3 overs, 2 for 19. And it's cutting, as I said, it's going down the wire definitely as the Rukai run rate is going up to 8. And can you believe it, runner ball chase it was, and it is becoming very difficult for the batters to bat out there in those tough situations, in those tough conditions out there. Mushtaq Baba finishing over with a dot, finishing over on a high, has conceded just 4 in that previous over. And it will be Heather who has been introduced into the attack, and for the first time he is going to bowl in this match. Hasn't bowled an over yet as he goes with the first ball of his spell, and overall it will be over number 16. 30 balls and 38 is the equation. 5 wickets in hand. Irfan Ahmed and Shahid Ganai have got a job to do. Irfan batting on 1 of 8 bowlers and Shahid Ganai batting on 6 of 9. And it is evident, there is no doubt, the batting has been quite difficult out there for the batters, and scoring runner ball has become very tough out there. Now it's gone up to 8 runs per over. It's nearly 8 runs per over from here on, and we'll have to wait and watch who is going to hold the nerves, who is going to come under pressure, and who is going to steal the show. It's Heather with the first ball of his spell. Over the stumps he goes, and this has been punched away and straight to his lefty at short covers. Good effort there in the field, has saved a couple of runs for the team. 29 balls and 38 runs. And even though in the last overs, if they have to get 20 as well, if you have wickets in hand, you will back yourselves. But when it gets up to 10, 11 on this kind of a wicket, and it will be very tough. Next ball, and he just gets a bat on the ball and steals a quick single, and they needed a direct hit and overthrows and
they have converted that single into a double. He wasn't interested to take the single first, as the ball chops it onto the pad as a non-striker was charging for a single. Wicketkeeper picks the ball and aims at the non-strikers and fails to hit the target as the ball goes to long on, and the batters convert that single into a double. 86 for 5, 2 runs off first 2 bowlers, 28 balls to go, 36 runs to win, and is becoming a high-octane, a high-profile game. Well, as United Tapar, while defending 122, are giving an equal fight, a neck-to-neck contest between bat and ball. Next ball, down comes the batter, goes cross-batted onside, and that is a terrific hit as the ball sails into the stands for a 6. A timely 6, and that should ease the nerves as well. And nothing wrong with the ball, but the batter just dances down the track, comes down the wicket, and with a full swing of the bat, swings leg side and swings it all the way and into the stands. Half a dozen it is. The ball has gone all the way. As I said, that 6 should ease the nerves in the dugout. It takes them to 92, 30 runs to get off 27. Now it gets closer to runs and balls. The difference between runs and balls, it gets closer and closer. A timely 6 off the bat, and that is a mighty strike from Irfan Ahmed. Takes PMS Panjipora to 92 for the loss of 5. Although Haider is bowling for the first time in this match, he hasn't bowled yet, and in this kind of a situation, the captain trusting him and inviting him to bowl, and he has given away 8 runs of first 3 bowlers. As I told you earlier, it has been really a tough outing for the batters out there. The wicket helping the bowlers in that good length area whenever the ball has been up there, and it has completely put batters on the back foot. And this one, the batter gives it a hike by coming down the wicket and swatting it on the onside and smashing that one away into the stands for a 6. And with 5 wickets in hand, PMS Panjipora, it's nearly run a ball chase. It was going 7.5, but now it's just a shade of a 6 with 27 balls to go, and they need 30 runs to win. And they will be hoping those couple of big shots will come by, and he will get that deficit down to run a ball. Haider, who is bowling his first, and they will be fancying their chances. They will be trying hard up against Haider. You know, he hasn't bowled in this match. He is bowling his first over, and he will be the man they will be targeting at this stage to get those big shots, to get a big over here, and to get this back, to get this game back into the track. Although the ball has gone out of the park, and now it's back into the play field. And still I can say it's an evenly poised game. A game which is hanging in balance for both the teams. Could go anyway. We have witnessed a seesaw battle, and we still cannot decide yet. It has been almost 36 overs off the game, and not been able to decide who's going to carry the day, who is going to go over the line. And as I said, who steals the nerves from here on, who holds the nerves from here on, will seal the deal, will go over the line. And the batters do have the chances, but as I said earlier, it has been really a tough outing. It has been a tough going for the batters. Anything pitching in the good length area, and the batters have failed to score. The strike rate of the batters have gone down, and it will be Haider back onto the top of. There will be a bit pressure on him as he has conceded a 6 as he goes once again to Irfan. Just wicket-keeper up to the stumps now. Over the stumps he goes to Irfan, and Irfan gets the edge and has been caught at third man. One more goes down, and there is a twist again in this game. He was trying to go on the onside, and he gets it high on the bat. Goes over wicket-keeper's head, who was right at the stumps. Short third man was there, and he doesn't make any mistake. It's a good catch under pressure, and he completes it with ease. Haider strikes, and he has his last laugh after being hit for a towering 6. He comes back with a wicket, and here is once again a twist in this game. 6th one goes down. It's 92 for 6. 26 balls to go, 27 runs to win. It's 30 runs to win, to be precise.
And that surely was a good catch by the fielder at short third man. He was running to the left and it was a high pressure catch. The ball was going quickly to the fielder, but he held us on to a good catch. And you see the wicketkeeper was right up to the stumps and you can see he's elated, he is jubilant. He knows it's the kind of a wicket here where they can come back into the game. With PMS Panjipora in tatters on 92 for 6. And Heather strikes with a wicket after being hit for a 6. The new batter is in. It's Imran at number 8 for the team. And you gotta give due credit to United Tapar. They know how the wicket is going to behave. They bowled really well. They didn't lose hope even though they just had 122 to defend. But it has been high class efforts with the ball. And at this stage they are making a match out of this one, out of nowhere, as Heather goes to the new batter. And he just punches it away, but cannot be the fielder though. He keeps the ball away but straight to the fielder. And there is no addition to the total. 25 balls to go, 30 to win. And who is going to go over the line? Who is going to lift the Champions Cup Hygam 2025? Is it going to be United Tapar or is it going to be PMS Panjipora? This one is outside off stump and doesn't get any connection with the ball. It's a dot. He finishes with a dot. 16 gone, 92 for 6. शुक्रिया फिरदौस। तो 92 है स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर और 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 24 गेंदों का खेल बाकी और 30 रन अभी भी दरकार मुकाबला जीतने के लिए पीएमएस पंजीपोरा को। 24 गेंदें और रन दरकार 30 मुकाबला जीतने के लिए। हैदर जिन्होंने अपने पहले ओवर में 8 रन दिए और विकेट हासिल की, उनका ओवर मुकम्मल होता हुआ। और अब देखना होगा 17वें ओवर में किस गेंदबाज को बुलाया गया है यूनाइटेड तापर की जानिब से। यूनाइटेड तापर ने इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 121 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पर और 122 रन का हदफ मिला था इस मुकाबले को जीतने के लिए पीएमएस पंजीपोरा को। और पीएमएस पंजीपोरा इस वक्त स्कोर है 92, 6 विकेटों के नुकसान पर और 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। रन दरकार 24 गेंदों पर 30 रन। शाहिद गनाई सामना करेंगे। अब हिसार लेफ्टी को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। हिसार लेफ्टी अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं और पारी का 17वां ओवर। लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से और स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 93 हो चुका है 6 विकेटों के नुकसान पर। हिसार लेफ्टी एक मतलब फिर ओवर में जो है पहली गेंद के साथ, यह पारी का 17वां ओवर और हिसार लेफ्टी के कोटे का आखिरी ओवर। इससे पहले हिसार लेफ्टी ने 3 ओवर किए, 10 रन दिए और उनके खाते में कोई विकेट नहीं गई। शाजिया अरशद और जीएम मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हिसार अगली गेंद के साथ, यह ओवर की पहली गेंद होगी, हालांकि दोबारा से पहली गेंद फेंकनी होगी हिसार को। बाएं हाथ के गेंदबाज गेंद की दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और उछाल लेती हुई गेंद आखिरी लम्हात पर गेंद को बल्ला दिया। हालांकि गेंद जो है बल्लेबाज को ग्लव्स को छूने के बाद विकेट कीपर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। शाहिद गनाई सामना करेंगे एक मतलब फिर हिसार लेफ्टी की गेंद का। 23 गेंदें और रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 29। हिसार बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं और पारी का 17वां ओवर। अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे, गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया वापस बॉलर की जानिब, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को खुद ही फील्ड किया हिसार ने और एक और डॉट गेंद। हर डॉट गेंद के साथ दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों पर, क्योंकि यहां से जो है मैच का कुछ भी नतीजा आ सकता है। हिसार लेफ्टी आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जाने वापस जाते हुए एक मतलब फिर ओवर में अगली गेंद के साथ शाहिद गनाई जिन्होंने 6 रन बनाए 11 गेंदों का सामना किया। इस मरतबा अंदरूनी किनारा और सीधे स्टंप्स को छू गई गेंद, तो इस तरह से एक और विकेट गिरती हुई। कुल मिलाकर ये 6ठी विकेट गिरी है, 6ठी विकेट गिरी है, बल्कि 7वीं विकेट गिरी है पीएमएस पंजीपुरा की शाहिद गनाई के रूप में और बोल्ड किया उन्हें हिसार लेफ्टी ने। बैक फुट पर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और सीधे स्टंप्स को छू गई, तो इस तरह से 7वीं विकेट गिरती हुई 93 के स्कोर पर हिसार लेफ्टी के खाते में जाने वाली पहली विकेट।
वसीम मुजफ्फर हमारे साथी सऊदी अरबिया से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हिसार लेफ्टी ने क्या जो है अपना बॉलिंग स्पेल फेंका अपनी टीम के लिए, 3.3 ओवर किए, 10 रन दिए और 1 विकेट हासिल की हिसार लेफ्टी ने। पीएमएस पंजीपुरा की टीम इस मुकाबले में बिल्कुल बैकफुट पर खड़ी है, हालांकि यहां जो है उतना फर्क नहीं है गेंद और रन्स में, लेकिन यहां रन्स बनाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल जो है बढ़ती हुई, और रन्स बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल। अब देखना होगा, तनवीर वानी आए हैं नए बल्लेबाज, 93 स्कोर, 29 रन अभी भी चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, 21 गेंदों का खेल बाकी है। तनवीर वानी नए बल्लेबाज आए हैं इमरान का साथ निभाने के लिए, हालांकि इमरान जो नॉन स्ट्राइक एंड पर है उन्होंने भी अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। दोनों फ्रेश बल्लेबाज है और यहां हिसार लेफ्टी जो है अपने कोटे में आखिरी ओवर फेंक रहे हैं और ओवर की चौथी गेंद फेंकेंगे हिसार लेफ्टी नए बल्लेबाज तनवीर वानी के लिए। तनवीर वानी बिल्कुल फील्डिंग का जायजा लेते हुए ग्लव्स लगाने में मसरूफ और अब बिल्कुल तैयार गेंद का सामना करने के लिए तनवीर वानी, लंबे दराज कद के मालिक, और क्या बड़ी हिट्स लगाने में जो है कामयाब हो जाएंगे, देखना होगा। हिसार लेफ्टी तनवीर वानी के लिए गेंद की बैकफुट पर विकेट कवर करके गेंद को खेला, खेलते ही दाट पड़े और रन यहां पे चुरा लिया। ओवर थ्रो की सूरत में क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? जी हां, और दूसरा रन भी मुकम्मल, तो 2 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 95, 7 विकेटों के नुकसान पर। काफी नाराजगी जाहिर की है फील्डर्स ने ओवर थ्रो की सूरत में जो रन आया। 95 मजमूई स्कोर, 27 रन चाहिए, 20 गेंदों का खेल बाकी। 27 रन, 20 गेंदों का खेल बाकी है। क्या यूनाइटेड तापर की टीम के गेंदबाज ये 27 रन बचाने में कामयाब होंगे? देखना होगा। हिसार लेफ्टी इसी बीच अगली गेंद के साथ लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा और 1 इजाफी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 96, 7 विकेटों के नुकसान पर। 96, 7 विकेटों के नुकसान पर। हारिस जावेद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हारिस जावेद। वसीम मुजफ्फर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हिसार लेफ्टी एक मतबा फेर ओवर में 5वीं गेंद के साथ, सामने है तनवीर वानी। तनवीर वानी के लिए ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद बिल्कुल बल्ले के करीब से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 96, 7 विकेटों के नुकसान पर हिसार लेफ्टी अपने कोटे की आखिरी गेंद के साथ 3.5 ओवर में 13 रन दिए और 1 विकेट हासिल की हिसार लेफ्टी ने। 19 गेंदें और रन दरकार 26 मुकाबला जीतने के लिए। हिसार लेफ्टी अपने कोटे की आखिरी गेंद के साथ, तनवीर वानी है सामने, बैकफुट पर गेंद को खेला, हल्के हाथों के साथ फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 30 गज दायरे के अंदर, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर मुकम्मल, तो 18 गेंदों का खेल बाकी है और रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 26 और कुल मिलाकर 17 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 96 मजमूई स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान पर पीएमएस पंजीपोरा का। यूनाइटेड तापर के तमाम फील्डर्स जो है, तमाम खिलाड़ी आपस में सलाह मशवरा करते हुए कि किस गेंदबाज को यहां पे बुलाया जाएगा, क्योंकि ये ओवर जो है ये इंतहाई अहम ओवर है इस मुकाबले का। 96, 7 विकेटों के नुकसान पर पीएमएस पंजीपोरा। हिसार लेफ्टी 4 ओवर किए, 13 रन दिए और उनके खाते में 1 विकेट गई। यूनाइटेड तापर की जानिब से बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी का मुजाहरा किया हिसार लेफ्टी ने इस फाइनल मुकाबले में। वसीम मुजफ्फर, जीएम मोहम्मद, हारिस जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि इस गेंदबाज को बुलाया गया है बॉलिंग मार्क पर। यह ओवर जो है इस मुकाबले का अहम ओवर होगा और यह ओवर जो है किसी भी सूरत में इस ओवर को बचाना होगा गेंदबाज को। अब देखना होगा कौन से गेंदबाज है। हारिस लेफ्टी का जो है कोटा मुकम्मल हो चुका है, हालांकि अभी नाम अपडेट नहीं हुआ है और पंजीपोरा को अभी भी 26 रन दरकार, 18 गेंदों का खेल बाकी। 18 गेंदें, 26 रन। बड़ा खूब जो है दिलचस्प मुकाबला बनता हुआ ये फाइनल मुकाबला और कहा जाएगा कि दोनों टीमों के दरमियान कांटे की टक्कर।
तो 18वें ओवर का आगाज होता हुआ और बॉलिंग मार्क पर है हैदर। हैदर की पहली गेंद डॉट गेंद। सामने थे एमओ इमरान ने 3 गेंदों का सामना किया, अभी तक अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हुए हैं। अभी भी 26 रन दरकार, 17 गेंदों का खेल बाकी। हैदर अगली गेंद के साथ एमओ इमरान के लिए ओवर द विकेट। गेंद के जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश नाकाम और इस मरतबा गेंद थोड़ी बहुत नीचे रही, विकेटों के साथ चिपके हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 डॉट गेंदें लगातार 18वें ओवर में फेंकते हुए अभी तक हैदर। अभी भी 16 गेंदों का खेल बाकी, 26 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद के साथ हैदर, सामने है इमरान के लिए गेंद के ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ी बहुत और जगह खड़े खड़े खेलने की कोशिश नाकाम। एक मतलब फिर डॉट गेंद। 3 डॉट गेंदें फेंक चुके हैं इस ओवर में। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि यह ओवर जो है इंतहाई अहम ओवर होगा। अब देखना होगा मजीद जो 3 गेंदें हैं क्या उनमें कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने में कामयाब होंगे बल्लेबाज, ये देखना होगा। इमरान के लिए हैदर अगली गेंद के साथ गेंद के इस मरतबा बड़ा स्ट्रोक और गेंद 6 रन के लिए। देखना होगा मैदान से बाहर। जैसा मैंने पहले कहा था कि बड़े स्ट्रोक के लिए जरूर जाएंगे इस ओवर में और वही करते हुए इमरान गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए और इन 6 रन के साथ 100 रन भी मुकम्मल होते हुए 102 हो चुका है मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। 14 गेंदों का खेल बाकी है और रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए अब 20 रन चाहिए। 14 गेंदों का खेल बाकी, मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प बनता हुआ। इब्राहिम तांत्रे हमारे साथ सही पूरा लंगेट से जुड़े हैं। हैदर ओवर की 5वीं गेंद के साथ इमरान के लिए अच्छी गेंद, पूरी तरह से जो है गेंद पर बीट हुए और गेंद बिल्कुल स्टंप्स के करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। 13 गेंदें, 20 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। क्या आखिरी गेंद पर कोई बड़ा स्ट्रोक लगाने में कामयाब होंगे इमरान? अगर लगा पाएंगे तो फिर राहत की सांस लेंगे डगआउट में बैठे हुए तमाम खिलाड़ी। ये सभी कुछ खेल के साथ साथ और आखिरी गेंद के साथ हैदर ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया। इस मरतबा हवा में खेला गया स्ट्रोक नो मैंस लैंड पर जाके गेंद गिरी की और इस दौरान दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। तो 2 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 18 ओवर्स के इख्तिताम पर 104, 7 विकेटों के बल्कि 105 हो चुका है। नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से, नो बॉल का इशारा। दोबारा से ये आखिरी गेंद फेंकनी होगी और बल्लेबाज के पास हाथ खोलने का पूरा मौका, क्योंकि फ्री हिट है और हाथ खोलने का भरपूर मौका बल्लेबाज एमओ इमरान के पास। 105, 7 विकेटों के नुकसान पर रन दरकार 17, गेंदें बाकी है 13। हैदर ओवर की आखिरी गेंद के साथ फ्री हिट गेंद को खेल दिया है बल्ले का निचला हिस्सा। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिड विकेट बाउंड्री से फील्डर आए 1 रन सिर्फ मिल सकता है, तो 1 रन का इजाफा और स्कोर बढ़ता हुआ 106। 12 गेंदें, 16 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। So we are witnessing an interesting game. 12 balls to go. They need 16 runs to win. It's 106 for the loss of 7 wickets. Mushtaq Baba, he has finished his quota, I guess. Imo Imran is batting on 9 and Tanveer Wani is batting on 2 of 3. This has been an absolute thriller, a cracker of a game, the final one of Champions Cup Hygam 2025, and both the teams fighting it out neck to neck. And now gone on to those final 2 overs, and I never thought that when 121 was scored it will go down this way, it will go down up to that 19th over. And credit goes to the bowling unit of United Tapper as well, the way they bowled it. It has been an incredible, a scintillating effort with the ball, a stellar performance from their bowlers. Now the equation is 16 of 12, first ball, and this has been driven away wide off, long off. Are they thinking for a couple? No, they just stay with a single. 11 bowlers to go, 15 to get. 107 for the loss of 7 it is. The Haris Javed Irshad Tantri.
thought that 122 to defend. United Tapar will take it till the last with 3 runs of first 4 balls. 4 runs rather. It's 110 for the loss of 8. And 12 runs to get off 8 bowlers. As Mushtaq Baba gets ready to Kausar Sofi. He faces the next one and tries to drive, gets beaten. He is nowhere to the pitch of the ball. He is nowhere close to the delivery and drives away from the body. And it's a dot ball. It's a crucial dot delivery at this stage. 7 bowlers, 12 runs to get. And this is getting intense. It's getting closer and closer. And witnessing an absolute thriller, a blockbuster of a final. Both the teams fighting it out, sweating it out. And as I said, no one even thought that 122 and this will go down to the final over. This one is short and wide. And no signal there by the umpire. It's a legal delivery. It's a dot ball. He finishes with a dot. And now they need 12 runs of final 6 bowlers. And it's Imran there who can use the long handle. He can hit the ball long way. He can have a blast out there. But he is going to take the strike, though he is on strike. 6 bowlers, 12 runs. So who is going to bowl the final over? You know the calculations. Hisar lefty has completed. Akib has completed and Mushtaq Baba has done with his spell. 6 bowlers, 12 runs to get. 6 balls and 12 away to lift to the title of Champions Cup Hygam 2025. And they are trusting Heather, I guess. Sir Akib Wani will have to wait and watch who is going to bowl the important final over. It's $1 million over here. 12 runs he has to defend. So is he going to defend those 12 runs for the team? And is Imran going to be the hero? He needs just 2 big sixes, 2 big shots to seal the match, to seal the final game. Absolutely incredible and a spectacular final game between the 2 sides and giving everything, infusing everything into this one. And United Tapar had 122 to defend and they have absolutely made a match out of this one, getting this one down to the final over. And you gotta give credit to the bowling in it, to the fielders as well. They never lost hope and they had that faith in the bowlers, they had that belief in the bowlers, the captain trusting his resources, and they have delivered an absolute epic performance with the ball. Now it has gone down to the final 6 bowlers, 12 runs to win, and Imran has got to take strike. He's patting on 12 of 12 bowlers, and I guess they have gone to Heather. He is trusting Heather. Long off is out there. There is long on. There is deep mid wicket on the onside with deep backward Skellig at the boundary. Short third man, gully point cover on the offside with the first ball. He launches him up in the air. There could be a chance. The fielder and he completes the catch. 9-1 goes down. It's Imran who has to take a long walk back to the pavilion. He was trying to clear the bigger boundary, the long on boundary, gets it high on the bat. He didn't get enough power behind the shot. And the ball just goes up in the air. It was a skier. And that is a spectacular catch at long on. That is a dazzler at long on. It was a high pressure catch. And the fielder at long on settles under the ball, takes the catch with cool and great composure. 9-1 goes down. It's 110 for the loss of 9. Phew, that has been a great game of cricket. With a final batting pair, 5 bowlers. And even though he cannot blame Imran there, he was trying his level best to go for the big shot to finish it off with a 6. He didn't got the timing onto that. He got high on the bat. The ball just flew in the air. And long on fielder settling out there and completes a catch. At this stage it's always that pressure on each and every one, and you just shine coming out of the situation and shining out brightly with the final man just walking down the center, and who is going to steal the show, is going to steal the nerves here. And as I said, captain trusting Heather and bowling the final over. He has got a wicket with GM Muhammad and Akib Nazar enjoying the game. 5 bowlers, 12 runs, 2 biggies, 2 big shots will seal the deal for PMS Panjipora. But while as 1 good delivery, a wicket here will mean that
United Tapar will successfully defend 122 and they will lift the title. They will be crowned as the champions of Champions Cup Hygam 2025. Still hanging in balance. A big shot will mean that pressure will be on the bowler. He has got plenty of protection on the boundary ropes. He just wants his fielders at the respective positions. Gets ready to bowl to Saifuddin. 5 bowlers and 12. As he goes over the stumps to Saifuddin, it's a slower ball and he just pushes it back to the bowler. It's a direct hit and he is shot off the ground. Incredible, absolutely incredible. He was trying to steal the single to bring Kausar back on strike. Let's take a look at the slow motion replays. Picks the ball, aims at the non-strikers and hits the bullseye and catches the batter well short of the crease and puts the final nail in the coffin of PMS Panjipora. They have successfully defended 122. It has been an incredible game and they look absolutely over the moon. Cloud 9 on they are and jubilant they are, and all I can say, absolute pain and disaster for PMS Panjipora as they failed to scale the target, as they failed to score 122 in their allotted 20 overs. Congratulations to the side of United Tapar as they won the final by 11 runs and now they are the champions of Champions Cup Hygam 2025. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मैं अपनी तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से और जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं इन सब की तरफ से इस चैंपियंस कप हाईगाम की फातह टीम यूनाइटेड तापर को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बड़ा कहूँगा मैं कि दिलचस्प मुकाबला रहा, आखिरी गेंद तक जो है कशमकश रही मुकाबले में। और मैं दानिश्वर का एक कॉल कहना चाहूँगा रनर अप टीम के लिए कि शिकस्त ताख़ीर है, नाकामी नहीं। ये चैंपियंस T20 कप का आखिरी मुकाबला यानी फाइनल मुकाबला था हाईगाम के इस खूबसूरत स्पोर्ट्स फील्ड पर। और मैं अपनी तरफ से जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इन सब की तरफ से इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमेशा से इस मैदान में जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते आए हैं और इस मैदान को खेल सरगर्मियों के लिए जो है हमेशा इसमें जो है पेश रहे, तो इसके लिए भी उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और बिना किसी ताख़ीर के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की जानिब आ जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा जो हमारे यहाँ पे गेस्ट हजरात हैं उनमें नंबरदार मोहम्मद मकबूल परे साहब जो कि यहाँ पे मौजूद है, और इनके साथ साथ गुलाम मोहिउद्दीन यत्तू साहब है, और इनके साथ साथ जावेद अहमद यत्तू साहब है, इम्तियाज अहमद साहब है, और सैफुद्दीन साहब जो कि अपोजिट साइड टीम के, जो कि PMS पंजीपुरा गालिबन टीम के जो है एक खास रुकन है, वो भी VIP स्टैंड में बैठे हुए हमारे मेहमानों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, आपने अपनी आमद को यकीनी बनाया और इस फाइनल मुकाबले की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अपना कीमती वक्त हमारे साथ सर्व किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिना किसी ताख़ीर के मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की जानिब आ जाऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा मोहतरम मोहम्मद मकबूल परे साहब जो कि लंबरदार है, वो आगे आ जाए क्योंकि उनके हाथ से मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी जाएगी। और मैन ऑफ द मैच आज के जो नाम है, कोई आइडिया? वैसे आज क्रिक हीरोज पे सामने आ जाता है तो हैदर मैन ऑफ द मैच मोहम्मद मकबूल परे साहब थोड़ा आगे आ जाए, नंबरदार हैगाम, उनके हाथ से जो है ट्रॉफी जाएगी। और मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा इम्तियाज अहमद साहब भी यहाँ पे मौजूद है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड यूनियन खुई है, उनका भी वेलकम करते हैं यहाँ पे। और अगला मोहब्बतों भरा तोहफा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए है। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए
जो नाम सामने आया, इससे पहले कि मैं नाम दोहराऊं, मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा मोहतरम इम्तियाज साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड यूनियन खुई। उनके हाथ से जो है ट्रॉफी जाएगी और नाम है इमरान। इमरान, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। मोहतरम इम्तियाज साहब से जो है मोहब्बतों भरा तोहफा रिसीव करते हुए खूबसूरत सी ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम इम्तियाज साहब। और कुछ इस मैच के जो दो ऑफिशियल्स थे उनके लिए भी मोहब्बतों भरा तोहफा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से, साथ में ऑनलाइन स्कोरर भी थे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा मोहतरम जावेद अहमद यूसुफ साहब को। जावेद साहब यहाँ पे आ जाए, उनके हाथ से ये ट्रॉफी जाएगी। आज के मैच के जो मैच ऑफिशियल्स थे और साथ में ऑनलाइन स्कोरर, मैच ऑफिशियल्स और ऑनलाइन स्कोरर, उनके नाम ये मोहब्बतों भरा तोहफा। और आज के मैच में बेहतरीन अंदाज से जो है अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिए। तो आज के मैच में जो है ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क और जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी पर लाइव नशरियात पहुंचाई गई। तो मैं यहाँ पे मोहतरम सैफुद्दीन साहब को बुलाना चाहूँगा, उनके हाथ से ट्रॉफी जाएगी। मेरे साथी ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क के इंग्लिश कमेंटेटर फिरदौस अहमद जो है, उनके लिए मोहब्बतों भरा तोहफा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैफुद्दीन साहब। और इससे पहले कि हम मजीद आगे जाए, हमारे जो गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मोहब्बतों भरा तोहफा रखा गया है। तो मैं सबसे पहले मोहम्मद मकबूल परे साहब को बुलाना चाहूंगा, उनके हाथ से ट्रॉफी जाएगी मोहतरम गुलाम मोहिद्दीन येतू साहब के। वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं आप आ जाए यहाँ पे मोहम्मद मकबूल परे साहब, थोड़ा आप आगे आ जाए, क्योंकि आपके लिए मोहब्बतों भरा तोहफा और हाथ से जाएगा मोहतरम सैफुद्दीन साहब के। मोहतरम सैफुद्दीन साहब के हाथ से जो है मोहब्बतों भरा तोहफा जाएगा मोहम्मद मकबूल परे साहब के लिए, जो कि नंबरदार हाईगाम है, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से ये मोहब्बतों भरा तोहफा। और मैं चाहूंगा सैफुद्दीन साहब यहाँ ही रहे, क्योंकि उनके लिए भी मोहब्बतों भरा तोहफा। और मैं चाहूंगा इसके लिए मोहतरम इम्तियाज साहब यहाँ पे आ जाए, उनके हाथ से ये मोहब्बतों भरा तोहफा जाएगा हमारे मेहमान सैफुद्दीन साहब के लिए। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर उन्हें ये जो है वो ट्रॉफी रिसीव करते हुए पीएमएस पंजीपुरा टीम के रुकन भी थे आज के मैच में। और अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा मोहतरम सैफुद्दीन साहब, अगर यहाँ पे आ जाए तो उनके हाथ से ट्रॉफी जाएगी हमारे यहाँ पे इम्तियाज साहब ट्रेड प्रेसिडेंट खुई, उनके लिए मोहब्बतों भरा तोहफा। तो इम्तियाज साहब यहाँ ही बैठे, क्योंकि आपके हाथ से मैं चाहूंगा जाएगी ट्रॉफी हमारे एक और मेहमान मोहतरम जावेद अहमद यूसुफ साहब के लिए।
विनिंग टीम के खिलाड़ी जो है वो मोमेंटो रिसीव करते हुए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज साहब, लेकिन आप वहां ही रहे क्योंकि अब जो है मैं चाहूंगा जितने तो आखिरी लम्हा इस चैंपियंस कप हाईगाम का और विनिंग टीम फातिहा टीम 6th एडिशन की यूनाइटेड टॉपर ट्रॉफी रिसीव करते हुए साथ में 18,000 रुपए का